हो गया भाई चालू। लेटेस्ट प्ले। स्टैमिना खत्म। तो इनको पकड़ भी सकते हैं। एम दबाया। ओ भाई अपन किधर है? The path ends here. Guess we'll just have to climb. Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Okay, let's take the route we planned. We're off to a statue of the seven. Which of the seven are you looking for exactly? ओ Oh, wow. 2 बार लाइव। यस 2 बार लाइव। That's a statue of the seven. 7 There are a few of these statues scattered across the land to show the seven's protection over the world. Among the seven gods, this god controls the wind. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's the reason why. समझ ल। As we all know, poetry and language कुछ flow like नहीं the समझा wind. भाई सच में। There'll definitely be someone there who knows about your brother. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. ये बड़बड़ कर रही है भैंस। So let's hop to it.
Oh, Ooh, did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of Animo. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Uh-huh, it's because you're not from this world to begin with. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of Animo. So perhaps, because you got power from the god of Animo, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your brother. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. These are the animal powers you got from the Statue of the Seven. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? We must proceed with caution. advance to the heart of the forest. चलो. Windblade. Wood. एक ही हो गया अरे कंप्लीट अभी.
सर्वे क्या है भाई? भाई बाहर भेज रहा है। भाई बोल बोल बोल। भाई भाई मत कर बस। भाई नहीं तो मेरी जान जान। Windblade. अरे अरे एफ दबा I'll भाई। keep this close. ई दबाता है बार बार। ये नहीं तोड़ सकता ना। पूरा स्ट्रीम में देखेगा जेंशिन बेबी। ये हुई ना बात। Windblade. ये शायद ऐसा होता है ना कि जब तोड़ना होता है फिर ये बाद में स्पॉन भी होते हैं। स्पॉन मतलब आते नहीं है इधर। A reward on the road. सी स्टोरी पे ध्यान दे बस। मेरे वीसी आजा कभी भी कुछ लगे तो। अरे हाँ मैं खेल चुका हूँ ये, बट अभी बहुत सारा चेंज हो गया भाई। जैसे मैं कार्डियक को पूछा आके मल्टीप्लेयर खेलने के लिए कितना लेवल लगता है, वो उसने बताया 15। तेरी बेस्ट दे दे रिपोर्ट दे।
ड्रैगन सोए हुए थे ना। Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Who's there? That was close. Paimon almost got blown away. Luckily, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. Just what was that? Paimon thought we were gonna get eaten. It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. Of course not. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big rock over there. Let's go take a closer look. वो बंदा Be कहाँ गया? careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get out of here. अरे ये स्टोरी ऑटोमेटिक मतलब मेरे को बार बार करनी पड़ रही है, तो ये होता नहीं है क्या? हेलो बिग फैंस। अबे ते स्टोरी ऑटोमेटिक नहीं होता कुछ। Hey, you! Stop right there! एम्बर May the Animo God protect you, stranger. I am Amber, outrider for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't sound like a local name to me. And this mascot, what's the deal with it? I mean, we've only been traveling partners for 2 months, but we've already become the very best of friends. So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some other reason? I am, Shout but out not दे दो। to worry. I can keep you both safe while doing that तेरा too. नाम भाई। Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Oh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. मेट्रो ने बताया था भाई। I give you my apologies, strange yet respectable travelers. That sounded so fake. Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Favonius Handbook? हो गई भाई अनलॉक। So, suspicious travelers, what are you doing in Mondstadt? She got separated from her brother during a really Patega. long journey. Paimon is her travel buddy, helping her to find her brother.
Oh, looking for your family? Huh. Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. A hilichurl. Quick, get it! These monsters have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. Nothing to it. Though I've got to say, you surprised me a little with your moves there. Toasty, testy. Thanks for the backup. How'd it feel? Now that you mention it, Toasty-testy. how is it the hilichurls ended up here? These creatures don't seem like the type to set up camp so close to cities like this. Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well. When the storms hit, we usually end up with at least a few injuries, so the Knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area. So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city? Exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little bit safer. Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. उसका ये बहुत ही हार्ड है एम्बर का. I'll keep this close. पीरवुड से क्या होता है? The fire. पीरवुड. I'm the survival expert of the Adventurous Guild. Nice to meet you. What should I cook next? Oh, are you travelers from around here as well? No, we just happen to be passing by. What are you cooking? Smells good! I see. Welcome, travelers. I'm Lynn, the survival expert of the Adventurers Guild. As you can see, I'm experimenting with some new recipes. Eat before you go. The first rule in the Wilderness Survival Guide. Picnic? Oh, Paimon just loves picnics! My travel partner here is good at cooking as well. Oh, there's a cooking pot right there.
Show me what you got. Genshin of It's good to have someone to practice with. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer for me. chicken mushroom. Is it done? Mmm, smells good. Let me try. Hmm. Hmm. Uh-oh. Now that's really tasty. Paimon told you so. With your culinary skills, you should try more difficult dishes. Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Have them. Can we really have them? Won't you run out of ingredients? That's okay. You should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness. Don't forget to look carefully. There's also a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter that sells food and ingredients. Go have a look when you've got the time. Okay, thank you for the info. ECR Tayo. Yes, yes, yes. रूड बंदा है भाई. Finding someone to chat to would be better than sitting around. अंदर जा. अरे अरे अरे. Let me officially introduce the city of wind, dandelions, and freedom. Travelers under the protection of the Knights of Favonius, welcome to Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. But the city folk don't look too cheery. Everyone's been put out of place by storm terror recently. But everything will turn out fine as long as Jean's with us. Jean? Acting Grand Master of the Knights of Favonius, Jean, Defender of Mondstadt. With Jean on our side, surely even the vicious storm terror will be no match for us. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, traveler. It's a reward for helping me clear out that Hilitril camp. Hey! Why doesn't Paimon get a reward? Because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy, sticky honey roast. Sticky honey roast! Come with me. We'll head to the city's, high ground. Paimon. Like कर दो लोंडो. Yes guys, like कर दो यार.
ये फॉलो करना है ना? This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. अरे इतना घुमा के जा रहा है। So, the present I want to give you is a wind glider. Outriders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love using them too. I brought you here to give it to you, so you can experience it right away. Wow, you're really excited about these wind gliders, huh? Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. Alrighty then, enough talk. Let's give it a whirl. अभी मिल रहा It's है। easy to use, but you still need to pay attention to my instructions. मैं वही सोचूं मिल क्यों नहीं रहा मेरे को। तेरे को ही रिप्लाई दे रहा प्लीज। उड़ के मस्त आना था रे मेरे को नीचे यार। The sky. ओ फाइट है अभी भाई। यार Huh? How are you staying afloat like this with just a wind glider? I'm preventing your fall with the power of 1,000 winds. Now, concentrate. See yourself grasping the wind. Harness its energy. Who said that? अरे कंचेट है क्या? क्या मार रही है? जेट मिसाइल मार रहा है। ये रस्टी, हाँ हेलो। बोलना। अबे एक मिनट रुक, तेरा आवाज क्यों कट हो रहा है? की वैडी। बोल बोल हेलो। बोल। हाँ, मैं क्या बोल रहा, तेरा लेवल कितना हुआ है मेरे को बता। 4 Are you hurt? डेवलप करने के लिए ना मैं अभी एक चीज कर रहा हूँ, वैसा मैप पे है ना
ऐसा येलो कलर का एक बॉल आ रहा है, ऐसा बड़ा सा। हाँ हाँ। उसको मारने जा रहा हूँ ना, तो वहाँ पे एनिमीज You've आ रहे actually हैं, got उसको the power मारने to से go हो up रहा है against मेरा, the dragon. जल्दी बढ़ रहा है। Are अच्छा, you a अभी new मेरा वो ally? शायद बॉल नहीं है, Or a क्योंकि new मेरा अभी storm? वो पहला वाला ये खुला है ना। ओके, Storm Terror is attacking तू नया Mondstadt आईडी बनाया क्या? itself! तेरा पुराना आईडी लॉगिन नहीं हो रहा था? Kaya, नहीं। Traveler, you've come at the right time. गया We वो आईडी must... शायद। Hold on, अरे Amber. जाता तो नहीं है भाई। Are you perhaps forgetting अरे to मेरे introduce मोबाइल का us? था वो। अरे पर मोबाइल का Oh, चलता है right. पीसी पे, और This पीसी का is मोबाइल का Kaya, दोनों our का होता cavalry है। captain. क्या पता भाई, These two देखना are पड़ेगा। travelers from afar. क्योंकि मैं भी From तो कर रहा हूँ afar. ना। मैं मोबाइल पे Is भी that चलाता all हूँ we know of them? ये वाले आईडी को। Long story short, देखना पड़ेगा। देख ले, देख ले। I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the Animo God. Oh, but everyone has their secrets, right? Relax. I won't press you for more. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. मतलब मेरे को थोड़ा कुकिंग वुकिंग भी करना है। How about a traditional Mondstadt delicacy? और my Sticky honey roast. intelligence. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. ये निकाल। The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you, and formally invites you both to our headquarters. नहीं लगा बे किसी को भी। ओ ये चालू हो गया मेरे पे। ड्रेसिंग रूम। ओके। ओके, तू आग फेंक रहा है क्या बेटे? रुक, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा मुन्ना, तेरे भी फाड़ूंगा, रुक जा। आई गो, मैं ही जल एक गया। ही है रे। क्या फर्क है? किस चीज में? अरे वो एम्बर का आउटफिट। क्या मालूम। ओके, ये तो नया ही आ गया ना, मतलब देखो ये अभी अभी जस्ट आया है। ये अपन कर रहे थे कब से, ये अभी आया है भाई, इसको भी करो क्या? अरे हाँ, दोनों में अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है वैसे, ये भी करते हैं। और वो तो कर ही रहे हैं अपन, ये वाला दोनों करेंगे साथ में, चलो। ओके भाई, गलत 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 गलत। This seems to be the Knights of Favonius headquarters. Let's head in. ओके, ये लोग भी आ गए। लेवल 5 हो गया भाई। लीसा। Jean, ये what's the लीसा। hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I've brought them. आजा बेटे, आजा, तू बचा, आजा। अबे नीचे And गिर once it गया। was over, I अबे वो brought them साले straight माइक बंद here. कर। अबे रुक जा, मैं नीचे जा रहा है। अबे नहीं नहीं, माइक Mondstadt बंद करके welcomes बैठ, you, मैं भी windborn माइक बंद कर travelers. रहा। I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Oh, are you sweeties here to help us out?
You're both so adorable. Sadly, the timing is regrettable. Storm Terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your brother. Paimon will help too. Good. In that case, we need a plan. With Storm Terror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds temples. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Our objective is to deal with 3 of the 4 temples. I trust everyone understands why we are only dealing with 3. Paimon doesn't. Knights of Favonius, time is against us. The storm is rampant. There's no point in maintaining a defensive position. All right, we need to take initiative and act before the situation escalates. यारेक्स के वीसी आजा। अभी नहीं भाई, थोड़ा बाद आता हूँ। फिश क्या है भाई? 11 ये क्या है? ये 11 थे, किधर गए? हाँ है। हाँ है। पीआरएक्स के वीसी कहाँ पे है बे तू? हॅलो, माईक ऑन कर. हाँ हाँ काम कर. आता तू जिथे आहे ना, काय तिथे 8 दिसते का खाली? 8 हा 8 दिसते. हाँ हाँ है। हा कर, विश कर. विश दिसते. हाँ, मैं तुझा आवाज काय तलवार भेटली. परत तलवार. अरे ह्याच्यात आहे ना, स्ट्रेट ओपनिंग कसं असतं तसं आहे. हो त्याच्यात कॅरेक्टर असतं, कॅरेक्टर भेटतं तुला चांगलं. तलवारच भेटतायत. हो ना, कॅरेक्टर भेटेल तुला. भेटली. काय भेटलं? नॉयली. ओके. चांगली आहे का ही? हा म्हणजे
म्हणजे आता सध्या तरी साठी चांगलीच आहे. अच्छा हीच भेटली. ओके. हा आता बॅक कर बॅक कर. अरे काम कर बॅक कर ना. थोडा डिले चालू आहे काय? ओके. अभी एम दाब एम. नाही, पहिले बाहेर जा, ह्याच्या बाहेर जा. घरात ते लायब्ररीच्या बाहेर जा. कमर दर्द कर रहा है मेरा, जा रहा हूँ मैं। कर रहा हूँ मैं। क्यों जा रहा है? ये बहुत गन से खेल रहा हूँ मैं। ऊपर से मेरा सब कुछ गया। From now on, the adventures will probably get more and more dangerous. We should make sure we're prepared. We could start by going to Mondstadt's blacksmith. काय? गेम कशी आहे? अरे मी खेळलोय पहिले. हा का? एम दाब. दाबलं. हा ऍडव्हेंचर रँक रिवॉर्ड दिसते का? हा वरती. नाही. हा तिथे नाही वर क्लिक कर ना त्याच्यावर. टेलिपोर्ट कर. चालत जायला लागेल तुला. नॉट येट अनलॉक. चालत जा. ते आता टेलिपोर्ट पॉइंट दिसते का? असं ब्लॅक दिसते का बघ असं याच्यासारखं. अच्छा हे वरती. हेलो, इसको कैसे ठीक करो रे? रस्ते ऐक ना. ते ऍडव्हेंचर रँक रिवॉर्ड दिसते का? हा. तर लोगो तुला ते इथे दिसेल बघ. मॅप मध्ये दिसेल, तिथे जा. इधर कुछ मत कर. क्या इसका नाम? ड्रैको. एम दबा. एम दबा. झूम आउट कर. ये खोल दो ना. अब एक काम कर, ऊपर जा. ऊपर ये सब खोले क्या टेलीपोर्ट? हाँ ये कर दे 5 बार कर दे, हो जाएगा तेरा. बस वो भी खोल. उधर भी है देख, वो नीचे वैसे ही है. वो नहीं है रस्टी. हाँ उधर क्लिक कर दे और नेविगेट कर दे. हाँ नेविगेट किधर है? नेविगेट का ऑप्शन ही नहीं है. उस पे क्लिक करना, एडवेंचर गाइड है. अच्छा वो वैसे ही हो जाता है क्या? बस क्लिक कर दे. हाँ उस पे क्लिक. किती डिले ठेवलं रे? डिले काहीच नाही. लो आहे. चालतच जा. Ad Astra Abyssosk. Welcome. कर लिया सारा क्लेम.
अभी वही मैप को फॉलो करते रहो ना। हाँ ये दबा तेरे को ये मिलेगा There's the blacksmith. तेरे मिशंस दिखेंगे देख। वो कर दे सब, फिर तेरे को एक्सपी मिलेगा। ये दबाने से मिशन। Take your pick. You'll find no. एक्सपी दबा एक बार। What? Over there. Take your pick. Or, Wow, he did. of course. All you अरे काय need is the ore. आता काय उपयोग नाही त्याचा, तुला ह्याच्यात वेपन्स वगैरे मिळालेत ना आता। No. ते आता Bring some back and no need. नहीं कैंसिल। He seems like a short-tempered guy. Was it something we said? एस्केप दाव एकदा झालं ना। आता जस्ट चालू केली का स्ट्रीम? हाँ स्ट्रीम काय स्ट्रीम ऊपर तुला वर तिथे हे दिसतंय का? हे शॉप वगैरे काय ओपन नको करू। अरे तुझे जेव्हा 15 लेवल होईल ना तर तेव्हा मी तुझ्या वर्ल्ड मध्ये येऊ शकतो। हाँ ते माहिती है फ्रेंड्स वगैरे। म्हणून तुम्ही पटकन करा। ट्रैको तो गया क्या? हाँ है ना? हाँ ना। इसको तो बता रहा। हो गया क्या 15? मेरे पास ये नहीं है, खाना नहीं। खाने के यूज कर रहा है अभी। अरे मत कर अभी बैक तेरा। हाँ अभी इसको फुल कर दे, फुल कर दे। आई इधर क्यों लाया ये मेरे को? कलेक्ट 3 आयरन। हाँ इसको फोड़ दे। ब्लैक स्मिथ का कुछ तो है क्या ये? ये दगड़ है ना पीछे, उसको फोड़। दगड़ थे ना उधर। हाँ, इसको फोड़ो। अरे ब्लैक स्मिथ का मिशन है वो, सुन रस्टी रस्टी वो है ना तेरे को आवाज भाई। सुन 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 रस्टी, थोड़ा आवाज कम कर दो मेरे पहले। वो जो तेरे को बोल रहा है ना, जो तूने मिशन लिया उसके ऐसे समझ ले। अगर तू उसके पास गया, वो तेरे को वेपन बनाना सिखा रहा है कि वेपन बनाने के लिए तेरे को इन फ्यूचर क्या क्या करना पड़ेगा। तो सच वो सिर्फ तेरे को एग्जांपल देंगे अभी सब कि तुम्हें कैसे क्या करना है। गाइड है तेरा, ऐसे समझ ले थोड़ा 1-2 लेवल तक। तो तेरे को है ना पहले कुछ पत्थर जमा करने पड़ेंगे, फिर उसको उधर जाके ला के देने के, उसके मुँह पे फेंक के पत्थर मारने के, फिर वो तेरे को एक वेपन बना के देगा। और वेपन के लिए क्या क्या लगेगा वो भी बता देगा। वो ध्यान दे सिर्फ, इसका मत सुन ये सब, मतलब वो कार्डिक्स का सुन बट पूरा मत सुन। वो पढ़ भी उधर नीचे लिखा है, ठीक है। ये है ना, इसको कार्डिक्स को अभी तक गेम की स्टोरी नहीं पता और वो खेलते जा रहा है। वैसे मत कर, तेरे को इंटरेस्टिंग लगेगी अगर तू स्टोरी भी जानेगा तो, समझ रहा है ड्रेको? तू भी अबे उसका 15 लेवल नहीं हो रहा। इसका ड्रेको का? अरे मेरा एक अकाउंट है पहले से मोबाइल वाला, उस पे है लेवल। मतलब कितनी है पता नहीं, 20-30। मतलब तू दूसरे बार खेल रहा है अभी, तभी भी तेरे को स्टोरी नहीं पता? अरे स्टोरी पता है मेरे को। क्या है बता? वो इसके ट्विन को ढूंढना है। हाँ फिर ठीक है, चलो तेरे को बेस तो पता है ना, एटलीस्ट तो खत्म है। और सिवा बाकी तेरे को अभी है ना, तेरे को ये गेम में है ना ऐसे नहीं की। और ये देखो भाई, ये तो सीख गया बे ड्रेको खेलना, कौन से एनीमे को किससे मारना है सब सीख गया बे। तो भाई गॉड है, मजा आ गया क्या? अरे भाई ये इसको कुछ नहीं आता पता है, कार्ड इसको अभी तक एलिमेंट्री एक्शन नहीं आते। खेलते जा रहा है भाई गरीब इंसान। ठीक है रस्टी खेल, तुम खेलो मैच। ये क्या गया? पेट फुल हो गया। ये अनलॉक करना टेलीपोर्ट पीछे। मेरे पीछे टेलीपोर्ट है। हाँ वो टेलीपोर्ट के पास से पेड़ नहीं टूटेगा। हाँ आगे, हाँ वो ये तो पहले ही अनलॉक है ना, इसलिए ब्लू है ये शायद। ना ना वो नहीं, उसके पास में ब्लैक दिख रहा है मैप पे। अच्छा ये ओके ओके। ये डोमन है वो। तेरे को लेवल बढ़ाना है क्या ड्रेको? हाँ
हाँ थोड़ा ही रहेगा, रुक मैं बता हो दे। जाएगा उसका, हो जाएगा वो अच्छा वो एसपी कलेक्ट कर रहा है। इसको यानफी भी मिल गई ड्रैगो को भाई, ठीक है भाई। जो भाई तो तुम मैंने दिलाई ये कुछ भी खुद के ऊपर क्या ये लग रहा है कब से देख रहा हूँ कते मैंने दिलाया मैंने किया और वो पागल है ना जो खेल रहा है। अबे कौन है This भाई? is it. One of the deserted या temples of the Four Winds. ये कौन These है? temples have been left to waste for years now. कौशल The people of Mondstadt पाउडर almost वगैरह never कौन come है? कौशल here. रहेगा वो। There's a कौशल chance रहेगा there's a नहीं तो कुछ भी है। monster nest or अरे Hilichurl camp दूसरा inside. अकाउंट कैसे लॉगिन करूं? Even Storm Terror has given up on दूसरा its own अकाउंट लॉग इन temple. करने के लिए तेरे को वो वाला आईडी पासवर्ड चाहिए भाई, वरना फिर तेरे को एटलीस्ट वो जीमेल तो चाहिए। Yes. है मेरे पास। है ना, I फिर कर ले also find. इजी। अभी मत Wait, कर, अभी ये the wind कंप्लीट here. होने दे। Let's go in. ये तो अभी करेगा नहीं, खोल सकता अभी, क्या बोल सकते हैं? कहाँ से करना है पर वो ये होगा क्विट रुक जा लॉग आउट करना पड़ेगा तेरे गेम। करना है कट कर। मेरे को तो लगता है पिक्चर वाले अकाउंट में तो इससे कम लेवल पे होगा। नहीं रे, खेला उसमें बहुत खेला क्विट उसमें गेम कर, भाई। क्विट गेम कर ना, क्विट गेम कर, क्विट गेम कर। बहुत खेला हो मतलब कितनी लेवल हो गया ऐसे? मतलब हम मतलब जस्ट गेम आया था ये नया नया, ठीक है, हाँ और इसमें मल्टीप्लेयर ही खेलना था हमको सबको। बेस की पर 15 लेवल तक होने तक नहीं खेल सकता वैसे। अरे 15 नहीं, उसमें बहुत है हमारी लेवल। हाँ लॉग आउट कर दे सबसे नीचे, सबसे नीचे। हाँ हो गया। देख ऑन स्ट्रीम मत कर, थोड़ा सा स्क्रीन हाइड कर ले। मैं हूँ, टेंशन मत दे तू, जब 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 टेंशन करेगा तब तक मैं तेरे स्ट्रीम पे रहेगा। स्ट्रीम पे ये कर, डिस्कॉर्ड पे स्क्रीन शेयर करके कर। वाह वाह, टैलेंट समझ रहे हो? गया प्रथम। ये सफेद स्क्रीन क्या है अभी? क्या आया दिखा? वेरीफाइंग। हाँ वो हो गया। ओ और 200 चाहिए भाई, 2 बार फाइट दूंगा हो जाएगा मेरा। हाँ जी ये ले उस हाँ अबे चैट पढ़ रहा हूँ। एडिटर टीएलआर पे खेल रहा है अकेला। देख रहा है, स्पीड देख रहा था भाई का, हम्म, चौड़ स्पीड है, मजाक नहीं। हो गया क्या? और एक बार है। और एक बार नहीं भाई, ये नीला का कंप्लीट हो। अच्छा इधर है। भूल गया भाई मैं। क्या हुआ भाई? ये कर देना उधर फॉरगॉट वगैरह। अरे हाँ वही करके भूल गया मैं, पता नहीं उधर अकाउंट एरर आ रहा है, मतलब है ही नहीं। अबे कौन सा तो ईमेल होगा देख, वो डाल। वो बहुत मतलब तेरे पास होगा, सब मेल डाल दे जितना मेल है तेरे पे। वो यूआईडी रहता है कह रहे, यूजर नेम। हाँ यूजर नेम पता है कहते हैं उसका, वो अकाउंट। यूआईडी रुक
अरे भाई ट्रेन नहीं मिल रहा भाई। ओ अरे भाई 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 बघ माझ्या मित्राची 24 होती तेव्हा, अजून एक मित्राची 15 होती. मी त्यांना ऍड केलेलं. मग विचार कर आता. 15 हो गया रे. हो गया ना. हाँ सी ओपन अप असेंट. ये क्या करना पड़ेगा? असेंट मतलब क्या होता है ये? अरे अपग्रेड कर दो इसको 20,000. नहीं होगा नहीं होगा अभी. अभी अच्छा ना तेरे को वो लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा बोल. हे तेरे को रुक, मैं तेरे इसमें रिक्वेस्ट डालता रुक. रुक जा मैं पहले उधर नेवर जाके स्टूडेंट. अवार्ड लेता हूँ पहले. के पीछे चल आया रहे रे ये. क्या आया मेरे इस पे. ये देख. जल्दी हेलो. आना. हाँ अबे नहीं हो रहा रे, क्या पता भाई. तू कुछ इसमें क्या मिशन में वगैरह है क्या? यूआईडी से लॉगिन होगा. हाँ होगा. ये क्राफ्ट कैसे? कैसे करूँ देख ले एक बार. ये क्राफ्ट कैसे करूँ? तू मेरे को स्क्रीन शेयर कर, मैं तेरे को बताता. भाई कितना बार स्क्रीन शेयर करना तू पड़ता है? नहीं रे, तू नहीं तू नहीं तू नहीं. मेरे पास तू है क्या? यूआईडी, वो पूरा नहीं इसका. दिखा. क्या दिखाऊं? उधर डालना. यूआईडी नहीं, यूजर नेम है क्या उसका? उसके नाम नहीं करना था. नाम. हाँ. उसका नाम अलग था एकदम डेंजर. फॉरगॉट पासवर्ड कर. अरे इधर भी वही पूछ रहा है. रुक तो देखने तो दे. ईमेल और यूजर नेम. हाँ ये देख. डालना डालना उधर डालना. अरे आईडी नहीं डाल. पता भाई. वो तेरा आईडी डाल, यूजर आईडी. नेक्स्ट कर. वो ऊपर वाला. नो. हाँ हाँ. ये देख. शायद अकाउंट डिलीट हो गया होगा. नहीं होगा, नहीं होता रे डिलीट वगैरह. फेसबुक से किया था, ट्विटर से किया था. देखना फेसबुक एक से बार. अभी किया मैंने मेन अकाउंट से. अरे यार, तेरे पास क्या बोलते हैं, रजिस्टर ना हो नहीं. कितने मेल है तेरे पे? मेल एक ही है भाई, जो मैं गेम वगैरह पे डालता हूँ. एक बार डाल के देख रजिस्टर नाउ पे. वो उससे साइन इन किया गया अभी का अकाउंट. हाँ करके देखा वो. ये देख. कुछ मत कर कन्वर्ट वगैरह. अबे यार इधर मत कर भाई, कुछ पैक कर दे. कुछ हो गया. ये देख ये भैया. अकाउंट था क्या वो? यही यूज करता हूँ मैं मोस्टली तो.
हाँ फिर अभी यही ग्रो कर अभी कुछ ये भी नहीं कर अभी क्या करे 20 तो लेवल था ना ये 15 होने वाला अभी अकाउंट पे कौन से गेम अटैच है वो दिखता है क्या रे फेसबुक पे? हाँ दिखता है ना कहाँ से पता चलेगा गेम? अरे ते आधीच अकाउंट लॉग इन करून गेम खेळते नंतर करू आपण रात्री वगैरे तेच कर ब्रो आता तर माझं म्हणणं आहे बे हैरी सुन ना तू कौन से तो क्वेस्ट में है, मतलब मिशन में है तेरा ये खोल जे दबा जे पीछे जाके रुक वो अभी नया खुला है ना रुक रुक क्रॉस कर एस्केप दबा कोऑप मोड आया नहीं इस पे क्या कोऑप मोड आया नहीं ना इसीलिए 15 हो गया ना तेरा फ्रेंड्स पे जा हाँ नहीं ये मेरे को कुछ मत डाल अभी बैक ब्लैक कर बैक स्क्रीन है यार, ब्लैक स्क्रीन। वो अकाउंट लॉग इन कर रहा था, ट्राई कर रहा। नाइट बॉट भी डैडी बोलता मेरे को, पर हम अभी नहीं तेरा बोलते ना। ये टाइम को अभी क्या करो रे नहीं अभी कुछ मत कर जब वो मिशन होते हैं ना तभी कर वो कर दे कंप्लीट सब्जी मिशन ब्लैक स्क्रीन आ कर रहे दिया हो मैंने वो वाला वाला अभी मिशन आया ना नया वो कर दे कंप्लीट और मिशन नहीं खेल पा रहा हाँ। भाई। साला एक एक सब्सक्राइबर कम होते जा रहा है। ये क्या है? You can use that console to open the door. Wow, I can see so far into the temple. और कितने मिशन देंगे भाई ये लोग मेरे को ड्रैग करना बाद में मैं डेफिन I'll race you there. बक्सों में माल होता है भाई। पुराना अकाउंट गया। AF bro.
face Oh करना। no! A horn! The fighting must have got them riled up. Well, good thing I prepared my secret weapon, explosive puppet Buried Bunny. Steady as stone. पर कुछ तो था भाई टेलीपोर्टर। Are those explosive barrels over there? Yes. Well, one shot should be able to blow them up. पर इनको लग क्यों नहीं रहा भाई? I must leave no stone unturned. ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है टूटने वाला है ये? It's so high. Seems like there's something up there. But how do we get across? Isn't this a pyro monument? If we hit it with a powerful pyro attack, we might trigger it. I'll race you there. Dragon's breath. Is that where the power's coming from? Great, let's smash it. Phew, I'm tired. But at least this way we've helped Jean out. Okay. In the past, we were at least able to defend the city and keep it safe. This, of course, is mostly thanks to Jean. But now with Storm Terror directly attacking the city itself, the winds change, so too should our tactics. It's what Lisa likes to say.
Speaking of which, the 4 winds we were discussing earlier, if you want to learn more about our history, you can ask Lisa. I'm not saying I don't know our history, it's just... I mean, a librarian is supposed to be more knowledgeable than an outrider, right? ये जलती है भाई उससे। ये क्या कर दिया बे मैंने? डोमेन, लीव डोमेन मतलब कुछ और तो नहीं है ना? ये एक्टिवेट कर। Consolidated wind things. Let's head back to the statue of the 7 at Windrise and offer it to the god. It's a statue of the 7. Let's make an offering and see if the gods respond. Talk to Venger the blacksmith. Venger the blacksmith. ओ इधर जाना है बे। अरे वही मिशन था क्वेश्चन में। What do you want? Oh, yes.
I'd forgotten about that. These are okay, I guess. Should be able... करना है। If you ever find ore in the future, you can always come and see me. Ideally when I'm not busy. A blacksmith's work takes focus and concentration. It does not take small talk with customers. When the craft is good, business is good. That's all there is to this trade, and anyone who tells you different is trying to con you. And if there's nothing else, I'll carry on with my work. He's certainly committed to his work. Paimon will give him that. His temper isn't great, but leave it to him and he'll be able to forge what you need. Hard work is all there is to the craft. ये आगे क्या करना है? $42 level cardiacs.
I'll catch up. A little dusty. Best give it a spring cleaning. यार लड़की भागी थी भाई अब. Another target tracked down by Outrider Amber. Someone needs assistance. Leave it all to me. वो आग लगी तो ये जली नहीं. अबे आग में जली कैसे नहीं? हेलो रस्टी, हाउ आर यू डूइंग? अरे एकदम बढ़िया. आग में ये जली कैसे नहीं? ओए ठीक है भाई, अभी जल गई थी देखो.
अरे ये बच गए ना, ये बच गए। A little dusty. Best give it a spring cleaning. क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे। इससे एचपी कितनी बढ़ती है? 1000। Easy bro. You. Hey. Easy man. What is this behavior? Behavior. ठीक है। दो बनाओ। और क्या बन सकता है? कुछ परफेक्ट। 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 Perfects against perfects. Easy bro. Perfect. Perfect. DC stream बंद कर। चालू है क्या? परफेक्ट ना। परफेक्ट। मस्त। जैसे आज स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे? यरक्स बताएगा। बड़ा बड़ा स्टेमिना बड़ा। क्या ये चढ़ पाएगा? कहाँ घर बसाने जा रहे हो सर जी? थोड़ा से बच कर जाओ। I must leave no stone unturned. क्या उठा रहा रे? नीचे रख। मेरे को जला रही अभी।
तू आजा As a good knight should. नाइस कुछ तो निकाल रहे थे भाई ये ग्राउंड में से ये देख Steady as stone. Leave it all to me. ये शील्ड क्या बन रही है इसके साइड में Steady as stone. इधर क्या है ओ नीचे You've arrived. Come closer. Can you smell that? Something must have happened in the temple. I imagine there will be slimes, hilly churls, and whatever's giving Storm Terror extra power. Oh yes, it is going to be lively in there indeed. म्यूजिक बॉट को सर्वर म्यूट दिया है बे वो हटा क्या डैमेज है वही तो As bustling as it may be, no, I can't imagine it will be dangerous at all. It's a pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by such an atrocity. Let's head in. No one makes offerings to the Four Winds anymore, yet the old winds never vanish. We need to clear out the temples for the Four Winds. कोई बात नहीं ये फाइट है मार लेंगे Let me show you how the knights... चल भाई ये क्या है टेलीपोर्टर If I'm not mistaken, the end of the temple should be up there. Wait, how do you know? Experience. The kind of experience you get after years of dealing with things like this for others. Freeze! Cool it! Traveler, unless I'm mistaken, you don't seem to have a vision. So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? It was a very strange occurrence. Dodge this! Ah, finally, we're here. Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up.
आग लग गई रे. Water! We can use this to put out fire. Good idea. That's some keen observation. We should get Jean to give you a title and make you a knight. चाहिए अपनी आग बुझाने के लिए था. उई उई. Next bro. Speaking of, did you know? Storm Terror was once one of the 4 winds. I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can ask the acting Grand Master about it. Is that the thing that Storm Terror is using to gain its power? Seems probable. Let's deal with it. Bravo! What a performance. You are, to my surprise, a well-trained knight. The battles you just fought were sights to behold. I see you already have the knightly virtue of modesty. Stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known throughout the City of Freedom, well into the future. Please do visit me at our headquarters when you have the time. I also know a lovely tavern, if that's more your thing. Quite rewarding, no? We've seized another temple from Storm Terror's grasp. I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. See you later then. Bye-bye. Bye-bye. There's no way Hilly Turtles organized an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity. Thus you were behind this. Knights of Favonius, always so inefficient. Agree to disagree, but your involvement in this just made things a whole lot more interesting. क्या है वो मिलना चाहिए भाई. पहले ना ये एक्टिवेट कर लेता हूँ. वाह. अरे इसकी Go, Baron Bunny! Hey!
How fortunate. How fortunate. इसको खाना कैसे खिलाते हुए? No one escapes my sight. अरे अरे सर जी ग्लिच हो गए क्या? Wow, these will come in handy. ईज अब जाता है भाई. That's more like it. Another target tracked down by Outrider Amber.
ये ऑपोजिट जाना है हमें, उस साइड। वो देखो वो रहा। सब टीपी खोल। हाँ वही कर रहा हूँ, रास्ते में जो जो भी है ना वो खोल रहा हूँ। ये क्या है, इनको मैं अभी पेल रहा हूँ क्योंकि है ना लेवल भी बढ़ाना है ना अपना। रास्ते में जो जो ये जो जो भी दिख रहा है उनको पेल रहा हूँ मैं। अरे ये चाहिए ना अपने को। लेवल तेरे को मिशन करके बढ़ेगा। डायरेक्ट मिशन ही करता हूँ। अरे इसको देखो, अरे Dodge this! Cool it! एक और किधर है? अरे ये देखो। Dodge this! Cool it! Quite the find. Dodge this! Cool it! Dodge this! ये ध्यान भटकाता रे बहुत, ये अगर मिले ना बहुत ध्यान भटकाता है ये। Lisa. Yes. Hey, cutie. Hello. You too cute. अबे ऊपर ऑटो। You're going to help me out too? Yes. How kind of you. Don't hesitate to come to me if you need anything. Good question. Basically, things other than that which require brawn or brains. So, what does that leave? इधर भाग जाते भाई ये।
अरे मतलब इतने सारे मिशंस भी करते हैं। सही है। I guess I could give this a go. I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Paimon, are you able to float across? Let's ride this wind current, shall we? ए, ये तो विच है बे। Leave it to me. Come a little closer. It's an electro monument. No wonder. Let me try to activate it with a bit of electro power. Stand back, sweeties. Yep. Hit. Hit. ओ टाइमर था। लॉल। क्या किया मुझे पता ही नहीं चला। Freeze! Cool it! Dodge this! When it comes to wet enemies, I've got them covered. इसको यूज कर ले तो जल्दी मर जाते। Oh, another wind current. Let's ride it up from here. तो मार दिए। ये हुई ना बात। You've been a naughty boy. Try not to enjoy this too much.
Chain lightning can be set off between electro-charged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first. Oh, bhai. Oh, you want to know about this gem? You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. It's used by the Chosen to draw... थोड़ा ज़्यादा एक्साइट हो गया मैं. What? You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? No, I doubt it. After all, hilly churls aren't exactly known for their smarts. And you'd more or less qualify to be a magister's apprentice. Break it, and we can head home and relax. The thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of Anemo. The Dragon of the East, Storm Terror, its real name is Dvalin. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this Storm Terror business. So now you know why Dvalin is only able to channel 3 of the four winds' power. Because it has been consuming itself from the beginning. Because of hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself. To become Storm Terror. But why would one of the four winds hate the city it was supposed to protect? As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud. Here, take this. It's a very old story from more than a century ago. ये क्या है बे? मेरे को लगा कुछ तो मिलेगा, ये तो सीधा बाहर ही फेंक दिया. साथ हो गया बे. It's finally done. Well, all that lay flow and elemental line stuff Lisa was going on about should hopefully be back to normal. Want to go back and see how the knights are doing? But if you got anything more interesting to do, Paimon can come too. By the way, we obtained another Animalculus in one of the Four Winds temples, right? We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statues. टीपीज. अरे उधर का आसपास का किया ही नहीं वे.
That didn't sound. This is bad. Such a hassle. What am I going to do? Oh, thank the thousand winds. Your arrival must be the grace of the gods. If I may ask, envoy sent by the Animo God to save this mere mortal, could you spare a moment? Ew, cut it out. I cannot let my peers hear about this. I cannot seek help from anyone else but you. Please, let us move to somewhere more fit for such conversations. Let's talk in the courtyard, just outside headquarters. Come with me. What's with the sneakiness? Please be quiet within the premises and refrain from making a ruckus. Anyway. Fine. This place will do. Tell us what it's about already. How should I begin? Oh, right. Let me tell you a secret first. It's a secret of my past, and I confide in you to keep it. Don't worry, Paimon's lips are sealed. As a matter of fact, my grandfather was a pirate. Oh. Wait, why do you sound so blithe? Do you think I'm making it up? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather, and this is solid proof that we are related by blood. My, how could you not know such common knowledge? This is no different from children inheriting their hairstyles from their parents. Yesterday, I was glancing through the notes my grandfather left and stumbled upon records that spoke of a treasure. Treasure? According to his notes, the treasure is buried in the lost Arcadian ruins. Treasure. But the location of the ruins is currently unknown. I've tried searching for clues. Treasure! Kaya, what kind of treasure is it? Gold? Or better yet, gems? Treasures that consist of nothing but gold and gems are third-rate treasures. My grandfather's treasure is a sword. A magic sword that grants the wielder unrivaled power. Oh, wow! The sword was dropped from Celestia into the sea by a god. It was later salvaged by my grandfather's crew by pure coincidence. The moment he gripped the sword, thunder roared, billows howled, and the clear skies were suddenly swallowed by raging winds. With the might of the magic sword, my grandfather went on to defeat a hydra, a silver-haired banshee, a wicked abyss dragon. But the immense power of the sword enticed many more greedy pirates. To avoid meaningless conflicts, my grandfather hid the magic sword. The world we live in is fascinating, full of unknown and inexplicable wonders. Holy moly, that's just insane! A gang of treasure hoarders has been very active lately, and many ruins have had their relics stolen by them. I'm afraid that they will soon discover the Arcadian ruins, and the magic sword will be lost. We won't let it fall into the wrong hands. We must get the sword before them. You just rest assured that we are here to help. Wow. Great. Please keep it a secret. I'll wait for your good news. Hey, so what you think? Isn't it exciting? We're talking about a super duper powerful sword. Well,
Let's go to the Adventurous Guild and see if we can find out more. The adventurers should know more about the ruins, right? Hey, are you a new adventurer? Want to join my team? Hey, are you a new adventurer? Want to join my team? Hey, do you have any intel on the Arcadian ruins? Arcadian. Can't say I've heard of it. Sorry, I'm still new here, so. But you can try posting a commission and see if there are any adventurers who know about it. That's a no-no. No way! We can't afford them beating us to the treasure. Really? Well then, I'll keep a lookout for your treasure. I mean, your Arcadian ruins. Great, thanks. उसने बोला किसी को बताना नहीं, ये बताते जा रही है. Hey, kiddo! Welcome to the Adventurous Guild! We're not here for something that boring. We're looking for a sword that fell from Celestia. One that can kill 8-headed banshees and silver-haired hydras. It's super mega uber powerful. It's fine as long as Paimon doesn't tell them the treasure's location. So, Cyrus, do you know where the lost Arcadian ruins are supposed to be? Arcadian ruins? Never heard of them. Thanks for your intel anyway. If you do find these ruins, I'd love to see them. My intel? Still no clues. Well, it's not like it's gonna be easy. Come on, it's the hiding place of the super amazing sword. Anyway, we should go meet up with Gaia first. Oh, you're back. Do you have news for me? Listen, we asked around the Adventurous Guild and found, well, nothing. That much is expected. Why is that? Oh, I only mean that what's the fun in finding it without the hard work? However, I do have some clues. I sent someone to collate black market intel. It seems that someone does know about the Arcadian ruins. Really? Where's the guy? Now, as per the black market's rules, they will send someone to meet us to prevent leaks. We will be meeting the informant at the Whispering Woods. Then what are we waiting here for? That's right. You read my mind. I am a knight, so I shouldn't have any dealings with the black market. You have my thanks. Of course, you'll be compensated for your troubles. By the knights. Ooh, no problemo.
Why is this happening to me? I shouldn't have helped him. Him who? Thanks so much for saving me. You're far more reliable than those Favonius guys. It's nothing. She's a traveler. She has to deal with stuff like this all the time. Traveler? I've heard stories about you. I didn't think I'd be saved by the one I'm here to meet. Oh, so you're the... I didn't know how I could pay you back initially, but now I think I'll just give you the intel for free. People in our circle know how important the network is. Lucky? But it's lucky for Kaya, isn't it? He's supposed to pay for the intel. Listen well then. The intel on the Arcadian ruins. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. Right. Wait, is that it? There's also this map that came with it. Could this be the experts the spot? So the clue is more like a riddle. Well, should be a piece of cake for you, right? Paimon will leave you to it then. ये तो पता है बे. Well, if you can't solve... I'll leave you the intel so you can... Thanks, Vaiii. 3, 6... What does that mean? If you don't want to ask Kaya, you better figure it out. I'll keep this close. You're back. Looks like you got the intel. Yes and no. It's a lot more complicated than that. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. What do you make of it? Riddles. How quaint. Let me think. The city in the lake is clearly Mondstadt. As for the 6-armed giants... Hey, that's smart. A windmill has 6 blades. It fits. Wow, that makes sense! So out of the 3 windmills, 2 are close to the statue. The other one is guarding... Ooh, this one Paimon knows! The treasure! Let's hope it's really that simple. Come on, let's go take a look around that windmill. Dude.
बहुत हार्ड है ऊपर जाना। अब देखना तेरा भाई जॉर्ज। कौन बोला वे हार्ड है? Let me see what's inside. She doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a front. When she's cold and alone, her true heart is revealed. There's another map. More riddles. ओ, वो अपनी सिटी, उसके साइड रोड, Oh no! ये पानी के बीच क्रॉस brain juice. मिल गया। चल। I'm gonna let you have all the fun, or you could get Kaya to help. अरे इधर है, इधर इधर ये साइड है। अब कहाँ जाना है? छिपकली जैसे चिपकते हैं भाई ये लोग। Map reader. Yes. She doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a front. Any idea what that means? Is this some page stripped from a love novel that you just happened to find? Oh, so it's not a clue. No wonder someone as clever as Paimon wasn't able to get it. I'm just joking. Take this more seriously, Kaya. This riddle is hard to figure out. Clear spring. Is it referring to Springvale? Passion rushing through the clear spring. Such inappropriate behavior. I feel like it has been creeping into Mondstadt for quite a while now. Unless that's something... Oh, my apologies. I shouldn't judge what one does in their own time. What's wrong with you? What kind of people do you think we are? The thing is, if the... Not a bad idea. Like when it appears, this only the clear spring that blesses and the ending, you should probably take someone who can manipulate cryo. It's nothing. Let's go take a look. No. वो डाल दिया। ओ भाई उधर ही है ना?
Freeze! Don't push your luck. Don't push your luck. Quite the find. लूल हो गया लूल। Ah! 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 Corre papá. This doesn't look good. अब अब क्या होगा? कैरेक्टर्स कैसे देखते हैं?
यही है ना? हैं? कहाँ गए भाई? I'll keep this close. ट्रेजर का ओ भाई उधर है बे। मैं इधर काय को आया था मरने। और इसके लिए अभी वो लगेगा। इसके लिए भाई अभी You're getting on my nerves. Let it rain. Dodge this. Freeze. Cool it. Fast. This time, the mysteries have all been solved. It sure took a lot of work. But in all fairness, this treasure map really is terrible. It looks like it was drawn by a pirate. So, now... ये थोड़ा मुश्किल है भाई। Let's go for it. Like, anyways, no, you heard nothing. Paimon just wants to see it. Definitely not to become super mega powerful and do nothing but play. Alright, Paimon will save the chit-chat for later. Arcadian treasure hunt, here. इसका ये किधर है टेलीपोर्टर?
board on the road. वो बड़ा वाला है, देखो इधर। हाँ, वो मैप अनलॉक कर। Dodge this! Ah! The Statue of the Seven seems to be affected by a monster nearby. Defeating that monster might remove this strange wind current seal thingy around the Statue of the Seven. Ha! Ha! Ah! Freeze! Not so hard! Ouch! Meanie! Cool it! Ha! Ha! Ah! Ah! Dodge this! Don't push your luck. Ugh, I'm getting tired of this game. Ugh, I missed a spot. वे तो बहुत खतरनाक है वे। इसकी भैंस की।
वापिस रिवाइव ब्रो, व्हाट द फक? Not so hard! Hey! Ouch! Meanie! सबको पेल रहा है भाई ये। What's the hurry? नीचे रहे दिखाता हूँ। Oh, so sorry. Don't push your luck. सब खाना इधर ही खत्म हो रहा है। ओए और कुछ? तो ओवर पावर्ड है भाई। आपसे पंगा तेरी भैंस की। ये मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं था रे। मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं था मैं जब खेल रहा था। ये जरा ज्यादा ही ओवर पावर्ड कर दिया भाई।
एक और सिटी है भाई, वो पता है, वो सिटी तक मैं अनलॉक किया है। I won't let you down. वाह आखिरकार। साले ये इनको मारना भी फालतूगिरी, टाइम वेस्ट है उनको मारना। ये नाइट बॉट का ये हुआ है ना, ये रुक, ये ठीक करने दो, 2 मिनट दो बस। Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. हो गया। अभी एलाइस का एरर आ रहा था ना, हो जाएगा। Opening a chest is like unwrapping a gift. ऊपर जाना है क्या?
नीचे है क्या? नीचे है। Get ready. Huh, Get ready for the gliding champion. I won't let you down. This must be the Arcadian ruins. Is it just me? Or does it look plain? Oh, Paimon gets it! The perfect disguise is always in plain sight! Kaya's grandpa sure is impressive. Oh, mice! It's no time to get suspicious. Hurry, the treasure is waiting for us. वाह, फिर से फाइट। I'll keep an eye on you. Ooh, you're taking me out? At the ready. I will protect you. This will be interesting. तो ऐसा ही है ना, ये फालतू फाइट है रे। Freeze! ओ सर जी, कहाँ जा रहे हैं? Freeze! You're getting on my nerves. Cool it. ओ भाई 3 सेकंड तो Dodge this. अरे कहाँ मार रहा है बेटे? Cool it. Freeze.
Cool it. Don't get frostbite. Freeze. Challenge failed. किससे मारू रे इनको? आग में इम्यून हो जाते। इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं काम करेगा। Dodge this! Oh, yeah. Freeze! This for subscribing, bro. Dodge this! Don't push your luck. Cool it! That was bro. Unexpected. Prepare to be blown away! सबसे पहले एम्बर का क्यू, फिर ट्रैवलर का क्यू डाल। अरे उससे वो इम्यून होते हैं, एम्बर का है ना, एम्बर से वो इम्यून होते हैं, आग से आग वाला नहीं मरता ना। जवान है बी। बहुत यूज होगा, हो जाएगा यार, वेस्ट हो जाएगा। छोड़। Ah, is this the end? Where are you, my treasure? Let's look around. I'll save you the trouble. How about you let me take over?
Sharp eye, but too slow. I'm Izzard. I thank you both on behalf of the treasure hoarders. We've been keeping a low profile. How did word get out? Paimon won't let you have the treasure without a fight. You would be wise not to underestimate us. My gang is just outside waiting for my order. However, they're not as, sociable as me. I'm sorry to rain on your parade, but your gang won't be participating in your current plan. If you'd like to ask why, you can go see them in Mondstadt prison. Or perhaps you'd prefer to join them permanently. The Knights. Hey, it's Kaya! Kaya, he wants to steal your treasure! Get him! Ugh, almost had it. Oh, you mean the treasure? Sorry, but there wasn't any treasure to begin with. You came all the way for nothing. Just give it up. What? No treasure? Did Kaya just say there isn't any treasure? You got me good. Didn't think the Knights would resort to such tactics. A thief has no right to criticize the methods of the Knights of Favonius. Wait, what are you— You're not gonna get me! Okay, oh god, what is this? I didn't mean it! What a troublemaker. You, Knight! You're not gonna watch me die, are ya? What an interesting suggestion. Fine, I'll confess and go quietly. Please, just help me! All right then. Guess I will have to do some overtime work after all. Ooh. No escape! Not so hard! You got me. ये क्या नया नया लाया है? वाह, अभी ये भी आ गए। Cool it. Don't push your luck. Dodge this. This moment will be frozen in time. Cool it. Don't push your luck. Let's spark things up a little. You're in for a little shock. How embarrassing. Having my life saved by a knight. Don't forget what you promised, or that thing will be the least of your worries. Hey, is this how the Knights of Favonius treats the people they catch? I'm just joking. All right, let's take him back. Sir! Yes, sir! Captain, should we take these two in as well? What? Of course not. They are the ones who made this arrest possible. Without them spreading our fabricated intel, we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. You're
All right, stop it already. Though the treasure doesn't exist, you did want it for yourself, didn't you? Otherwise, you would have informed me of your intentions, no? That... Well... Let's go! Paimon's done talking to him. Just a sec. You did help me out, so you do deserve a reward. This is the triumphant Harbinger of Dawn that points towards victory. As its name suggests, it symbolizes light and victory. If you don't mind, I would like to present you with this Harbinger of Dawn as a reward. Harbinger of Dawn? That's right. It suits a well-cultured and disciplined person such as yourself. Wouldn't you say, Paimon? Well, if the reward is this Harbinger of Dawn... You'd forgive me, right? I'm honored to have such an understanding friend. Yes. You have my apologies for the deception. I will not use the same method twice. What a wonderful day. Now, I have to go interrogate my suspect. Please excuse me. Do come visit me at our headquarters when you have the chance. Come a little closer. Going out is tiring.
बे लेवल अप कैसे करते हैं बंदों को? लेवल अप कैसे करते हैं? ये क्या हो गया भाई? लेवल अप अब इससे क्या होता है भाई?
गिरेगा, ये तगड़ा गिरेगा। ये फ्लाई क्यों नहीं करता? ये टेलीपोर्टर अनलॉक करना है रे ये, ताकि इधर आऊं तो डायरेक्ट आ पाऊं। Really best. हो रहा ये तो वो साइड में A reward on the road. ये इजी है, ये ऊपर ऊपर जाना होता है और ऊपर से नीचे तक ग्लाइड करना होता है। Hey, traveler! I've been looking for you everywhere. Seems like it's really growing, but then again, you don't have a gliding license, do you? A gliding license? What's that? Isn't it obvious?
You gotta have a gliding license to legally glide in Mondstadt. Oh, but we've been gliding for ages now. This is the first we've heard about it. Yeah, you've been gliding all over the place. Everyone's noticed. So, you came looking for us because you want to give us a gliding license? No way! The Knights of Favonius have strict rules. You need to pass an exam, and only then will the Knights issue your license. Today, I'm here as an examiner to oversee your official gliding exam. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what Acting Grandmaster Jean would say. An exam? What a pain in the butt. I'm sure you'll glide through it. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Storm Terror attacked, so I'm sure you'll have no problems. But we do need to respect the rules and glide properly. Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar with everything in there. For example, only one person per wing glider, no carrying anything over the set weight limit, no taking off using an animo slime, and so on and so forth. Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books too when Lisa was teaching me magic. Wow, that's a big old book! Paimon thinks we best get started. Great, come find me when you're done. I'll be at Windrise. The Knights of Favonius When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, "You have yet to find that which is most important." As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." That's a cool story. But is the Knight's gliding manual really written in that style? Anyway, let's go find Amber. Sad. यहाँ यहाँ कैसे जाऊँ भाई?
You're in for a little shock. Come a little closer. Come a little closer. No pain, no gain. ये भी पास में वो एक है ना टेलीपोर्टर, बहुत दूर है वो। Great, you're here. Did you have a good read? Sounds like it was a real drag. The gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean, though. Really? Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal Animo Slime takeoff. Apparently, if you pop an Animo Slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try it. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? Let me take a look. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Oops, sorry. I put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? This is so embarrassing. It's because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. But anyway, let's get back to the exam. Don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then, you just need to follow the marked route to the finish. Oh. कहाँ पे भाई? F bro. You gotta focus on your tech if you want to try it. Cool. You'll make it. Easy है बे बहुत. मैं खामा का कुछ ना कुछ ये कर. You nailed it! But it's no surprise, given the way you handle your glider in a storm. The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Don't keep me waiting! Alrighty then, you heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting.
पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। Hey, here! I'm all set up. Let's carry on with the exam. Same deal as before. Glide through the... इतने ऊपर कैसे जाऊं? Anything the knights can do for you? You didn't hurt yourself. Once you're ready, keep a firm grasp. ये कुछ समझा नहीं मेरे को। तो क्या करना, इधर से जाना है। मैं इतना ऊपर कैसे जाऊं? वो तो भेज ही नहीं रहा। Seems like you've got the hang of wind gliding now. Let's do the final stage. Easy! You've flown this way before anyway! Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Just keep thinking about that license. Windborne traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of the Knights of Favonius. What's going on? Please, show me your gliding license. It is against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12 of the Mondstadt Penal Code. You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact and ambush him inside.
but he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand it. Once we've got this raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Welcome to the Adventurous Guild. A reward on the road. This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. What do you think this is? It looks like a broken tree branch. Oh, Paimon knows. It's from a frame of a wind glider. Therefore, there are no elemental traces on it. It looks like it's just a plain old tree branch. A strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wind glider. Wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. How do we know if this was left by Raptor or an Animo slime? Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. How do we know if this was left by Raptor or an Animo slime? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Windblade!
Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. What happened? I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly churls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the hilly churl camps around these parts. It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out in the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny looking? In what way? Oh, he was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase! Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. Another test subject. You're open! Wingblade! Freeze! You're open! Freeze! Freeze! You're open! Suffocate! Freeze! Suffocate! Cool it! Freeze! Freeze! Done. Cool it! Freeze! Don't get frostbite. I got careless. Freeze! You're open! I got careless. Don't push your luck. Dodge this! Pick the wrong test subject. You're open! Cool it! Apart from the hilly churls, there's a bunch of funny-looking people, too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder... Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. Look where we are. ये 20 है, लीसा 20 है. The elemental power on the artifact must have worn off. और वो जो Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him! But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it.
ये देख 13 है 13 एम्बर 13 है There's only one way over there. Raptor must be up ahead. However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that gotta do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt herself. So, what do you say? Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. किधर है ये ऊपर क्यों नहीं देख रहा है You're a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go! हो गया? डेंजर है रे ये मस्त मजा आता है भाई ऐसा लगता है फुल जेट बिट चला रे भाई खतरनाक है भाई ओ कहाँ पे जाना रे इसको कैसे पहले
वाह और इस बार बार फेंकती है जेड जेन इलेक्ट्रिक है क्या ये? You're in for a little shock. Time to clean up.
मारती रही चल ये देखा ना कितना काम आता है खाना Champion of Mondstadt! Let it rain! Hey! अरे ये क्यों निकलती है वही बार It looks like there's no way across. Ugh, he must be around here somewhere. Amber! Over there! If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius outrider. You'll be sorry when I arrest you. You're right. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? If it's too far to glide, it's definitely too far for anything like that. There's also no sign of an anchor point. Bye-bye, kiddo. Oh no, he's getting... We can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry, I'm the gliding champion of Mondstadt. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Haha! Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. I know. Be my witness. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it!
Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully, the wind says I will make it, and that's good enough for me. I won't let you down. Amber, no! You're gonna fall! You're gonna fall! It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. Oh, so sorry. Come a little closer. Huh? Don't be such a brute. Try not to enjoy this too much. अरे चलो Picked the wrong test subject. ये मेन था क्या? All right, I got him! I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just give up and leave. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exam since then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether. But I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grandmaster Jean sometime. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. She just can't sit still, can't she? Guess that's why she's the outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Cathedral. Oh, hi. Getting this gliding license is turned... ये क्या है?
Anything the knights can do for you? Congratulations! Here is your gliding license. You're officially legal now. Yay! I'm not surprised, though. You are a natural after all. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding championship. I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there, on my own, gliding around. It's kinda boring. Whoa, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really is. Well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding gliding experience. Make sure you obey the rules. Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. अरे लेवल 20 करने के लिए अभी वो बुक्स नहीं है ना मेरे पास। सारे बुक्स खत्म कर दी लेवल अप में। अभी मिल गए थोड़े बुक्स। लेवल अप करते। अरे वो प्रोफाइल्स किधर होती है? मतलब Jean will be upset if she catches us lazing around like पार्ट रहते थे। किसी टेंपल में जाने के पहले अपन चूज करते थे पार्ट्स कैसे सिलेक्ट करूं, क्योंकि वो डिफॉल्ट कैरेक्टर मेरा नहीं है। देखो इधर Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look.
Anything the knights can do for you? Get ready for the gliding champion of Mondstadt! Have you heard of the storm terror crisis? Ancient alchemy truly is fascinating. Ooh. Paimon can smell fisherman's toast. The aroma is coming from a thick slice of soft white toast, topped with a generous serving of onion slices lightly caramelized by the toasting. Paimon's made up her mind. It's an emergency. It's on you. It's so good, hon. This might you can try. Can you work? Why? Don't you let me down. Ancient alchemy truly is fascinating. ये क्या है? ये तो दिमाग के बाहर है भाई, ऐसी चमकती चीजें अगर कुछ देखा तो। Look! Doesn't that shop look interesting? Let's see what the... Welcome. Yep. There's nothing here that Paimon recognizes. What did I tell you? These are all rare items. Is there anything that catches your eye? No need. I forgot to mention, I operate on a trading basis. Goods for goods. No Mora accepted here. I've been trying to make something a bit special recently, and I need a lot of animo sigils to decorate it with. Do you have any animo sigils with you? It seems the Animo Archon approves of your adventures then. More to the point, any animal sigils you find you can trade in here for items in the shop. Animo sigils appear all over Mondstadt. If you find yourself short, just keep exploring. Absolutely. Look. It's actually obviously the But it's working. Do come again, please also... Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Get ready for the gliding... Hey! There's a lady over there waving to you. Let's go and... Welcome to the Adventurous Guild. Actually, I have had my eye on you for a long time. You've had your eye on her, eh? Has she been causing some mischief? Oh, that is not what I meant at all. Being on the lookout for great adventurers is part of my job. When I look at you, I see one with the potential to rival the great adventurers of legends. Paimon
Paimon sees it too. Paimon always feels safe adventuring with her. Nevertheless, to the adventurer, experience is far more precious than potential. You must accumulate adventurer experience to increase your adventure rank. Time is of the essence. Allow me to brief you on... Wait, are you... Do not worry. In short, there are lots of... Basically, here is a new member's gift for... Without further ado, please allow me to officially Rusty, welcome you, our मेरे को new ये avid बता तेरे adventurer, कैरेक्टर कौन सा into लिया the है? guild. वो लड़की लिया है और उसका नाम क्या रखा है? मिस्टर रस्टी। कितनी क्वालिटी दूं तेरे को मैं? अबे क्या आरपी अच्छा खेल रहा अच्छा क्या? सुन ना एक काम कर तेरा Here स्क्रीन is शेयर your कर जरा मेरे adventurer को थोड़ी handbook. देर के लिए। क्या क्या? स्क्रीन शेयर करना। A new member coming aboard is a momentous occasion. A little ceremony is जल्दी कर only बे, fair. टुक कर। तेरा It has a record, and it is... हटा लिस्ट को। Oh, sometimes बड़बड़ करती when this happens, बिन मजे का। इनकी बड़बड़ नहीं there are सुनने की। but that will इनकी बड़बड़ नहीं do. सुनने Add की। ash... वो जो मेन ये रहता है ना स्टोरी मोड क्वेस्ट उनके ही सुनने की बस। हाँ वही इधर तो। हाँ इधर और ये कर बैक तेरा जो तारे वाला दिख रहा है क्या दूसरे नंबर पे वो देख। हाँ दबा। कर दिया यानफी मिले इसको। हाँ अभी सुन जो ये वाला पोस्टर है ना ये वाला हैजवर कर। यानफी क्यों दिया भाई ये वाला पोस्टर पहले रहता है सबसे। ये वाला ही पोस्टर है ना इसको ही पहले खोल इसके 8 विश पूरे कर दिया ना वो। नहीं नहीं कर फिर से कर नहीं हुए अभी तक ये बट ये जब तक ये चले जाता है ये बैनर 8 विश करने के बाद कर चले जाता है। कैंसिल कर शॉप मध्ये जा एक काम कर शॉप मध्ये जा। परचेस कर। हाँ जो नीले वाले ना वो कर नीले मत कर नीले वाले कर ये इससे नहीं दूसरे कर स्टार डस्ट से कर। हाँ इससे कर वर हाँ नहीं इससे कर उससे एक ही होगा इससे कर हाँ ये कर हाँ करना 3 ही मिल रहे। हाँ ले 3 ले एक उधर से लेंगे। हाँ अभी बीच वाले पे कर स्टार डस्ट पे कर। हाँ अभी नीला वाला ही ले इसमें से भी। भाई तुम पागल हो कि तुमको उसको स्टार्टिंग को ही भाई तुमने उसका ये करवा दिया नोवेल का बैनर खोले बिना खोले हुए। हमें नोवेल्सच खोलले। बैक कर अभी बहुतेक नहीं एक साथ 8 खोलना पड़ता है उसका। हाँ अभी इस पे कर विश मारो अरे ये मिल गई मेरे को। फिर से कर वापस मिली ना तेरी यस वापस मिलेगी D2 काम वाली ओके हीलर मिला चल तेरे को हील कर सकता है तो अभी खुद को आराम से। बराबर नहीं है वो बार है। मेरे तो एक बंदा बोलता है भाई ठीक है भाई मालूम है तुम महाराष्ट्र से पर इसको तुम बार क्यों बोल रहे हो भाई। बारबरा ऐसे कुछ तो बार नहीं है बराबर। हाँ स्किप कर बे कुछ नहीं अभी तेरे को डैमेज बढ़ा के देता हूँ फिर तेरे को खेलने मजा आएगा। सुन अभी सबसे ज्यादा डैमेज तेरा कौन सा कैरेक्टर देता है? पता नहीं। तो नंबर नहीं देखता उधर भाई नंबर के ऊपर तो खेल है आगे जाके नंबर तो बढ़ाने देखो। नंबर सबसे ज्यादा अभी तो इससे पड़ रहा है एम्बर से ना। हाँ तो सुन एम्बर को रोक नोवेल है ना तेरे पास नोवेल भी हील करता है तेरे को पता है? नोवेल कैसे हील करता है भाई? नोवेल भी हील करती है उसकी अल्टी हील करती है ई से शील्ड आती है तेरे पे ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता तेरे को। Leave it all to me. ये देखो ये शील्ड है आसपास दिख रहा है देखो ये शील्ड है जब तेरे को कोई मारेगा ना तेरे को लगेगा नहीं ज्यादा एकदम किंचिस का लगेगा। और ये इसकी जब अल्टी मारेगा ना वो घूमती है ना तो वो हील भी करते है उसके साथ शायद से मेरे को लग रहा है। तो एक काम कर हाँ, वो हील कर रही थी अपने आप। यस मेरे को लगा मैंने वो फोड़ा ना वो जो बैरल होता है देख गन पाउडर ये लीसा को हटा मिला। हाँ शाबाश लीसा को हटा फेंक दे इसको बट एक नंबर का टट्टी कैरेक्टर है ये। अरे ओ सर पानी में एकदम डेंजर कैरेक्टर है। हाँ पानी पे है ना पता वो अभी तेरे हिसाब से अभी तेरे को आगे जाके करना पड़ेगा। एक काम कर इसको अकला 2 मिनट के लिए कैसे करना ये दबा तेरा सीधा दबा पहले। हाँ चल अभी कट कर इधर से कट कर
को भी नहीं पता था, मैं अभी अभी खेला। एस्केप दबा, पार्टी सेटअप होगा देख उसमें, पार्टी सेटअप सबसे ऊपर दूसरे पे। तू एट अ टाइम 4 ही कैरेक्टर ले सकता, तेरे पास 1000 कैरेक्टर क्यों ना हो। हाँ उसके ऊपर क्लिक कर, अरे यार चलिए भी ठीक है। 1 2 इसको हटा देना है। कौन सा लूँ, ये लूँ क्या, ये अभी मिली जो हाँ हाँ ले ले ले, बराबर। ये ले ले, बराबर 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 बार 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 को Wish ये me करता है luck. भाई। रुक, इसको पहले फर्स्ट कीबोर्ड के तेरे बाइंड पे रख, जो तेरा मेन कैरेक्टर है ना, समझ, बार बार है ना, उसको फर्स्ट पे रख, क्योंकि वो हील करेगी हर बार, तेरा तेरा ज्यादा काम रहेगा उसका। बराबर किधर गई? ऐसा नहीं बे, उसको इधर से ड्रैग करना सीधा, कट करिए उसको, ड्रैग कर सीधा इधर को, उठा के फेंक उसको, दबा के रखना थोड़ा। हाँ वैसे मजा नहीं आता हमको, ऐसे तेरे प्रॉपर कैरेक्टर रख, फिर दूसरे नंबर पे एम्बर रख जो सबसे ज्यादा डैमेज देती है, वैसे कुछ तो कर। किया भी अच्छा है, किया और बार भाई इसका बार हाँ बार का ये भी अच्छा कर अच्छा सकता है। है। किया और बराबर का तो अच्छा कर सकता है, बराबर का है ना ई दबा, वो जब हील करेगी ना तभी है ना, किया का तू ई दबाएगा ना तो फ्रीज हो जाएगा सामने वाला, समझ रहा है, रिएक्शन हो जाएगा उनमें। हाँ इसको पहले ये दे, ये मत वेपन दे, नहीं उसका पहले ये कर, उसको अपग्रेड कर, एट्रीब्यूट्स में जा उसके बराबर के, हाँ इधर से, हाँ इसमें जा, अबे उस पहले वाला ही था, डुक्कर पहले वाले पे ही जा, मैंने पहले खेली है बोलता है, और हाँ कर उस पे क्लिक, तेरे करना क्लिक, बेस कर डिटेल्स कर डिटेल्स तो पे रहा जाने, हूँ। अच्छा डिटेल्स पे जानी चाहिए, इधर से नहीं होगा शायद। वाह हाँ तो अभी मत, I किधर मत टच wonder कर, when I'll चुप be बैठ, as tall as my big चिल्लाने लगा रहा है, लेवल sister. अप कर नीचे। ओ इसको मत कर, रुक 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 रहने दे, हाँ 5 तक ही कर, हाँ बस बस, ओके कर दे, ओके कर दे, ओके कर दे, ओके कर, डुक कर, ओके कर, हाँ अभी बैक जा थोड़ा, बाकी ये कैरेक्टर दिखा जरा, ये कट कर, ए ला 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 कर दिए, देखा आवत पाए। ये जो एम्बर है ना उसको पकड़ जरा 2 मिनट के लिए, हाँ उसके डिटेल्स में जा, ला 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 ला, असेंड पे क्लिक कर एक बार, लगने लगने वाले लगते तेरे, हाँ ये तो है तेरे पास, एक काम कर, ये देख, नहीं नहीं एडवेंचर लैक 50 लगेगी तेरे को, चल ठीक है चल, ये कट कर 2 मिनट के लिए, कर दे, बराबर को कर दे, और लेवल अप कर दे बराबर, जल्दी कर भाई, कंच पर में निकलना है, I wonder when I'll be बराबर as को पूरा tall कर as दे, my जितने तेरे big पास बुक है सब दे sister. दे, ये भाई अभ्यास कर बराबर, 2 ही लेवल बढ़ गया। हाँ वाह वो जरा महंगा आता है वो थोड़ा, हाँ सुन अभी बराबर का कुछ काम नहीं है, तो एक काम कर, इसका जो ये है ना, कट कर कट कर कट कर, कैसे कट कर ऊपर से, रुक ना, इसको पुस्तक देते ना जरा। अच्छा हाँ पुस्तक दे, हाँ पुस्तक दे, अच्छा ये भी बात। ये क्या होता है बे? आर्टिफैक्ट वो बाद में बहुत तेरे को आया है, ये एक काम कर, इसको दे दे, डॉक्टर हीलिंग डॉक्टर है ना वो वाला दे दे, ये हाँ ट्रैवलिंग, हाँ ये दे दे, कर कर हीलिंग बोनस दे दे, बादशाह मिला है तेरे को, और देखो उसके जैसा ही रहेगा, एडवेंचर वाला, हाँ डॉक्टर वाला है ना, वो डॉक्टर वाला दे दे, हाँ दे दे, कौन सा दे दे, इंक्रीज इनकमिंग हीलिंग, हाँ इसमें, हाँ ये ये नहीं रुक नहीं रुक, है नहीं नहीं रुक रुक रुक, तेरे को सेटअप भी करके देता हूँ, ऊपर क्लिक कर, हाँ उसमें जा जा उसमें, बे। उसमें हाँ हाँ उसमें जा कप में, हाँ इसमें से क्लिक कर, ट्रैवलिंग डॉक्टर वाला है ना, रुक जा, इंक्रीज इनकमिंग हीलिंग, हाँ ये वाला दे दे इसको, अभी जो सिलेक्ट किया था, हाँ ये वाला दे 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 दे, हाँ अभी 30 पे जा, फूल वाले पे जा, सबसे पहले वाले पे डुक कर, फूल वाले पे जा, हाँ अभी इसमें से ये दे दे, हाँ कर ये कर इक्विप कर, हाँ कर दे, हाँ और अभी दूसरे पे क्लिक कर, इसमें से वो वाला पंख दे, हाँ ये वाला, ये हाँ दे 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 दे, ये और है क्या ना, ये दे देते नहीं हैं। नहीं ये वाला मत दे, ये वाला मत दे, नहीं नहीं रुक, ये ट्रैवलिंग डॉक्टर वाला सेट है ना, हाँ वो वाला ही दे जो मैं तेरे को अभी बोला, हाँ बैक कर अभी 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बैक कर, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा तेरा बोला तू, एम्बर। हाँ एम्बर को खोल, बैक कैसे करूं? अभी एम्बर को खोल, तेरा एम्बर का डैमेज बढ़ा के देता है, एम्बर के वेपन को क्लिक कर, इसके हाथ में दे, हाँ 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 इसके हाथ
हाँ अभी सुन सुन पीछे जा, हाँ इस पे वेपन पे जा, स्विच कर। रुक 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 इधर रुक। डिफेंड डिफीटिंग एन ओपोनेंट रिस्टोर, ये वाला फेंक दे, ये वाला मत दे, ये दूसरा वाला देख। हाँ सुन 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 सुन, ये स्लिंग शॉट है ना, इसके ऊपर एनहांस कर। जल्दी कर भाई, टाइम नहीं है, पनवेल निकलना है। हाँ अभी इसके तरह कैरेक्टर है ना आप, अभी पहले सबसे पहले ये कर, रिफाइन कर दे, रिफाइन लेफ्ट साइड को सबसे नीचे रिफाइन रहेगा। जल्दी कर भाई। हाँ मैं कर कर रिफाइन। तो लिया साले। हाँ कर दिया, कर कर जल्दी कर, जल्दी कर, ये पनवेल निकलना है, हाँ कर रिफाइन कर। ये रिफाइन क्या है? तेरे जब भी तेरे पास 3 ये हो जाता है ना धनुष्य बाण, तो अपन 3 का एक बनाते हैं जो कि स्ट्रांग रहता है। ओ समझ रहा हूँ, समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। फिर से रिफाइन कर, डुक कर, और एक तेरे पास। और एक नहीं है। हाँ नहीं ये 2 ही थे, ठीक है चल। हाँ पीछे आ, पीछे आ, जल्दी पीछे आ, जल्दी कर भाई। हाँ एनहांस कर। याला हाँ इधर सियाले ऑटो ऐड कर, ऑटो ऐड कर, जाए घाई करते हैं। जल्दी कर भाई। इधर है ऑटो। अरे नीचे तो है ऑटो ऐड, उसके ये सामने जिधर क्लिक करा वो नहीं, उधर देख। है कर, हाँ कर कर कर। 61। अरे हाँ कर तो तू मेरी जान। हाँ, कर, रुक रुक, और ऑटो ऐड कर। हाँ लेवल 2 कर, इस पे लेवल 2 क्लिक कर। वो तेरे पास बाद में इतना हो जाएगा ना, तू समझेगा किधर खर्च करूँ। हाँ कर, कर तेरी वैस की कर। हाँ अभी जा एम्बर से एक बार मार के देख डैमेज कितना आ रहा है, जा इसको जा तेरे। मारूं? अरे रहता है ना उधर हेलिचुरुल, हेलिचुरुल रहता है, देखो उधर, उसको जाके मार। वेपन तो ले वो। वेपन ने अपग्रेड किया, लिया नहीं है बट हार्ट में, ठीक है भाई। वाह ये नहीं देखना मेरे को। जा जल्दी बाहर जा, टेलीपोर्ट मत ले। मैप खोल जरा, मैप खोल जल्दी कर भाई, मैप खोल। एम दबा, एम दबा, एम दबा। मैं बहुत तगड़ा लैग हो रहा है बे। हाँ रुक जा, अभी इधर जो विंड विंड नीचे वो पुतला दिख रहा है क्या तेरे सामने? हाँ उधर वाला है, वो वाला, हाँ दबा, मार टेलीपोर्ट, जल्दी कर भाई। जा पहिले हागून ये जा। जल्दी कर, फोन आलता। हाँ रुक 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 रुक, अबे रुक, राइट साइड देख, राइट साइड। अबे पीछे पीछे पीछे, राइट साइड। हाँ इधर इधर, हाँ देख उधर देख, बस्ती दिखेगी। एम्बर वैसे अच्छी है ना। लीसा नाइस चॉइस, मेरे को बहुत पहले पसंद थी पर बाद में कैरेक्टर दी। जो हेडशॉट दे, वो आदमी है ना, उसको मार, एक बार खींच के मार जोर से, बराबर हेडशॉट दे, हेडशॉट दे, कर ऊपर मार, थोड़ा ऊपर मार, ऊपर। अरे 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 एक मेला का है। मैं मर गया क्या? नहीं ये मर गया। कितना दे रहा है बेटा? इसको ये नहीं मरेगा, ये नहीं मरेगा। हाँ इसको बार बार से मार। अबे बार बार नहीं भाई, तूने आवाज किया। एक काम कर, किया ले, 4 दबा, 4 नंबर दबा। कितना डैमेज दे रही है अभी? ऐसे सिंगल में बहुत दे रही है वैसे, ज्यादा बोल रहा। ये भी मर गया। किया ले डुक कर। देरी है ना, अभी अभी ऐश कर, अभी खेल बनता। रुक रुक, पहले वो लीसा के जगह पे बार बार लेते, बार बार खेलना सिखा, जल्दी ले। बार बार कैसे लूं? अरे पार्टी सेटअप में जाना, डुक कर फिर से। क्या आदमी है, याद करा मैं जो सी नहीं रहे। उसने वैसे याद रखा है बराबर। पहले सीधा बने का, फिर बाहर आने का, फिर एस्केप दबाने का। फिर पार्टी सेटअप आता है। भाई हाँ लीसा पे क्लिक मार जल्दी, पार्ट से। ये तो एक काम कर, लीसा तेरे को पसंद है ना? लीसा रहने दे, ये नोवेल को हटा, कतई बकवास कैरेक्टर है इस दुनिया का। यही है ना नोवेल? नहीं पीछे, अरे ये नहीं, इधर से नहीं, पीछे ला, नोवेल पे क्लिक कर। हाँ इधर से बार बार ये कर। अरे बार अच्छा बराबर मिस्टर रस्टी मत ले। स्विच कर पे तो दबा। अरे आदमी यार, कहाँ पे? तो साला बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, एक बार इधर देते, एक बार उधर देते। एक काम कर, अबे रुक ना, इसको ये फर्स्ट नंबर पे ले, बराबर को। हाँ बस इतना सिर्फ नंबर याद रखा, ये सही नंबर में खेला आगे भी जाके। फर्स्ट पे हीलिंग, सेकंड पे डीपीएस। हाँ अभी बराबर ले जल्दी। पप्पी घेती
वो उसका गुड़िया है, वो गुड्डा बहुत काम का है। अगर तू नहीं मैं ना गुड्डा छोड़ डालने का, वो बंदे उसको मारने लगते हैं और गुड्डा फट जाता है। Kind of surprise I could sing about. हाँ सुन, अभी तेरे को बताता है मैं। बराबर का ई दबा। Let's dance. हाँ अभी किया ले जल्दी जल्दी किया ले, हील करेगा वो किया को। ये साइड पे जो घूमता है ना, हाँ ये देख, समझ रहा है, बिना खाने का हील। हील बढ़ रही है बे, दिख रहा वो नहीं? बढ़ रही है ज्यादा दिख रहा है देखो। हाँ अभी सुन, अभी जब भी तू फाइट लेगा ना, हाँ। तो बराबर ले पहले, सबसे पहले बराबर ले। हाँ बराबर लेने का। इसका देख, इसका टाइम आ रहा है देख, ई का। इसको सिर्फ है ना हीलिंग के लिए वापरने का, इससे लड़ने का नहीं है। ये कुछ मारती नहीं है, ये तो सिर्फ पानी फेंकती है, ये कुछ मारती नहीं ज़्यादा, ऐसे समझ। अच्छा ये हीलर है, सेज हाँ है। हीलर, हाँ सेज, ये सेज है। बराबर का फिर से ई दबा, ये आया देख उसका, ई दबा। ये फ्री में एरो क्या है? ये उठाते जा ये सब, इससे तो तेरे को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा ना। तो हाँ उठाया मैं, वो सब उठा, जो भी तू मार रहा है ना सब उठा। अभी बराबर का ई दबा, जल्दी दबा। Let the show बराबर का ई begin. दबाने का, एम्बर ले जल्दी, 2 नंबर दबा। हाँ इसे मारते जाने का सिर्फ, और मारने का सिर्फ। इससे तो तेरा गेम प्ले यहाँ मारने का, भी सिर्फ मारने का बस। बराबर का सिर्फ ई दबाने का और हील डालने का, समझ रहे? इससे तू हील भी होता रहेगा, मतलब तेरी हेल्थ ही कम नहीं होगी जिंदगी में कभी। सही है रही है, ये मस्त बताया तूने। समझ रहा है, ऐसे दिमाग लगाने का थोड़ा। अभी तू किससे भी जाएगा ना, एम्बर से मारेगा ना, एम्बर का भी अटैक कितना करके दिया ना मैं तेरा। तेरे को भी मिला है क्या बराबर? हाँ बराबर है मेरे पास। चलो सबको एक ही दे रहे क्या? हाँ वैसे समझ ले। और कैसे हो गौरव भाई? क्या चल रहा है भाई? अरे इस बंदे को सिखा रहा था, जरा स्ट्रीम कर रहा है इसलिए। भाई सब फुल। वो बार को क्या बोलता है पता है? बराबर। एक और बचा है भाई। बराबर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तेरा बराबर ले। It's nearly time देख for बराबर का afternoon ई दबाने tea. का और बाद में हील करने का, ठीक है? इतना ध्यान में रख। इसको मत देखो, इसको मत देखो, रहने दे। ये बाद में सब देख ले तू। अभी आर्टिफैक्ट का अभी मत लगा कुछ आर्टिफैक्ट। तो अभी स्टोरी मोड कंप्लीट कर तेरी, ऐश कर जा। अभी तेरा 15 लेवल होने का आ जाएगा, फिर मैं भी खेल सकता तेरे साथ। 16 अपन एक ही वर्ल्ड में, तू अलग काम मैं अलग काम, ऐसा करता है क्या वो? वैसे कुछ नहीं है देख, अगर तेरे को कौन सा बॉस वगैरह तेरे को मारना होगा ना आगे जाके, तो तू मेरी हेल्प ले सकता है, क्योंकि तेरे लेवल के बॉस है ना, तेरे को बहुत हार्ड जाएगा मारने के लिए। हम आके ऐसे पार्ट से ज़रा हमारा बराबर का एक फटके से मर जाएंगे वो, समझ रहा है? कम लेवल का है तेरा, जैसे जैसे तेरा लेवल बढ़ेगा ना, फिर तेरा बॉसेस भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। अभी समझ, तेरा वो हेलिचुरल्स आ रहा है ना, जो बीच बीच में आते हैं मारने के लिए, उनकी लेवल अभी कितनी है? 8-9 है। क्या है? मत खेल भाई, ये इसको नहीं समझेगा। इसको टाइम मोड, मेरे को मोड बना। ये मालूम ना, ये पहले तू कैसे आरपी खेलता था, आरपी खेल के तू कंटाल गया, वैसा टाइप का सीन है इसका। इसने बंद कर दी शायद से स्ट्रीम, नहीं है? हाँ बंद कर दी बाबा सिराज ने। बैकग्राउंड में रनिंग था वैसे तो। अभी थोड़े दिनों बाद ये खुद खेलेगा, टेंशन मत ले। टेंशन क्यों ले रहा है? सबका दिन आता है। कब आते बे, सब लोग खेलते तो। पहले हम भी यही उधर मेरे वीसी में भी सब लोग खेल रहे हैं अभी, देखना 4-5 लौंडे बैठे हैं खेल रहे। वो क्या बात कर रहा है? उनको करना फिर अपना शेयर, अपन ने ये करेंगे ना जेंशन वाली। हाँ करते ना। अब है क्या सच्ची में जेंशन खेल रहे तो? हाँ। शीश। उन्होंने भी अभी स्टार्ट किया क्या? पहले से खेलते हैं? इसी का पहले से, वो प्रणय का पहले से, माफिया अभी चालू किया। चल मैं डिस्कॉर्ड बंद कर रहा हूँ, ठीक है? चलेगा। मतलब स्ट्रीम। स्ट्रीम बंद कर रहा है? अरे डिस्कॉर्ड पे। अच्छा डिफेंड कर रहा हूँ। अभी कितना स्मूथ हो गया देख। डिस्कॉर्ड बंद किया। शीश। इसके बदले ना कोई तो और तलवार भाई, ये चेंज करनी पड़ेगी लीसा। तलवार तेरे को मिल जाएगी ना, तू विश वगैरह करेगा ना आगे जाके, तो तेरे को मिल जाएगी। नहीं टेंशन मत ले। ये भी वैसे Just अच्छा what है। will we हाँ? come across this time? क्या अच्छा है? अपना बेस कैरेक्टर अच्छा है, पर बाद में जाके तेरे को कुछ यूजेस लगेगा वो। हाँ बाद में नहीं, अभी के लिए। अबे अपने इधर गौरव भाई शायद से टॉप।
क्या लेवल है? करो तो थोड़ी ना अपने इसी पे हम गिनते ही नहीं। अच्छा मित्र थे याची पण लेवल 42 है भाई। किसकी? कार्डिक्स की ना? हाँ अभी बड़ा होगा। कार्डिक्स को तो अभी तक गेम भी नहीं पता क्या है, कभी भी खेल रहा है। भाई हंसने आता है कभी कभी, कैसे कोई खेल सकता है भाई जिसको गेम को मालूम ही नहीं क्यों है। वो जो नहीं पता उसको क्यों तभी भी खेल रहा है भाई। ठीक है फार्मिंग नहीं चल रही क्या इसकी? मैं तो वही कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। तुम फ्री हो क्या? हो करेंगे ना क्या? Let's dance. कौन सा आर्टिफैक्ट्स कर रहे हो? वो डेली रूट मारता हूँ। Bet you can't keep up with. लेवल अप करने के लिए अच्छा अच्छा हाँ हाँ। No escape. आओ That's फिर करते हैं cheating. साथ में। मेरा भी आर्टिफैक्ट फार्मिंग हो जाएगा फिर। मेरे को इसके लिए चाहिए कोकोमी के लिए। कोकोमी में बनना चाहता है मैं। सपना है मेरा कोकोमी में। एक सेकंड में ज्वाइन कर लेता हूँ। कैरेक्टर अनलॉक नहीं होते ना फार्मिंग से पर। नहीं कैरेक्टर तो खेलने के साथ तेरे को एक से एक कैरेक्टर मिलेंगे तो उसका चिंता मत कर। कैरेक्टर एक से एक मिलेंगे बट तेरे को उनको अपग्रेड करने की बहुत फटती है बाद में। वही बस तेरे को फार्मिंग करनी पड़ेगी भाई। कुछ स्टार्टिंग में अभी तो अगर लेवल अप नहीं है तो मोरा फार्म करना स्टार्ट करो भाई। हाँ मोरा बाद में बहुत लगता है पड़ेगी हर चीज मेरे। में मोरा चाहिए। अरे गौरव भाई मैं बाद में मालूम क्या मैं एक टाइम था मैं सोच रहा था इतना मोरा का क्या करूंगा यार, ऐसा लग रहा है बांट दो इधर। बाद में जो मोरा खत्म हो गया भाई मेरा, मैं मी भी नहीं मोरा खत्म हो गया भाई। कभी सोचा नहीं था भाई जिंदगी में सिर्फ एक वो छोटा सा आर्टिफैक्ट अपग्रेड करना। हाँ ना भाई यार मैं बोला भाई टैलेंट अपग्रेड करने में लाइक उसको 7 मिलियन लगता है एक टैलेंट अपग्रेड करने में, मतलब 10 तक। वहाँ ना भाई सही में बहुत खतरनाक। मिलियन अगर तीन हाँ। लेवल अप करोगे तो 21 मिलियन लगेगा। तेरे को लिटरली हर एक चीज फार्म करनी पड़ेगी। तू लिटरली एक कैरेट करेगा भाई फार्म। तू बोलेगा मुझे रेडिश कहाँ मिलता है। ये मोरा कैसे फार्म होता है भाई? टमाटर भी फार्म करते हैं लोग। तू तेरे को नहीं पता? हार्ड ग्राइंडर्स को देख, टमाटर फार्म करते हैं भाई लिटरली खाना बनाने के लिए। अरे पर वो मोरा कैसे फार्म करे? मोरा फार्म करने के लिए है ना तेरे को एक फूल वगैरह रहता है, मिशन से रहता है। हाँ उसको नहीं समझेगा, वो फ्लावर्स होते हैं। हाँ गोल गोल से दिख रहे होंगे, एक ब्लू कलर का डॉट दिख रहा होगा और एक येलो कलर का। उससे रेजेंस जाता है भाई। इन्होंने है ना इकोनॉमी बहुत खतरनाक बना के रखी है रेजेंशन वालों ने। कुछ भी बोलो रेजेंस का तो सब वही मेन गेम तो रेजेंस का है भाई। जो कैप है उसको तुम मिस्टेक यूज करना पड़ेगा, कब क्या क्या फार्म का शेड्यूल बनाना पड़ेगा इसमें उसके अकॉर्डिंगली। मेरे को वो लिटरली है ना वो वाटर क्यूब है ना उसको मारना है फिलहाल के लिए कोको में अपग्रेड करने के लिए 50 लेवल की है फिलहाल। हाँ वाटर क्यूब आया ना कौन सा तो बनाया वाला मैं टेस्ट वो उधर। हाँ वैसे कुछ तो है वो। तेरे को पता है मैं क्या करेगा? क्या? मोबाइल में भी डाउनलोड करके रखेगा। हाँ मैं भी वही करता था पहले। मैं पहले पीसी पे खेलता था, होने के बाद फिर सोते सोते मोबाइल पे। हाँ तो रीजंस पड़े हैं अभी मेरे पास अभी फिलहाल है ना कंडेंस है, मैं यूज कर सकता है ऐसे फिलहाल तो क्योंकि मेरा हो गया अभी। नहीं बॉसेस पे कंडेंस यूज नहीं होते ना, डोमेन में कंडेंस यूज हो जाएंगे और उधर ए लाइंस पे यूज होंगे। नहीं अपने को यही करना है ना वैसे भी आर्टिफैक्ट्स करना है। नहीं बॉसेस के लिए मेरे पास 56 है। चलो एक दो बार कर लेंगे। मेरा एक नहीं 2 बार किया ना तो हो जाएगा शायद। अरे यार पर मेरे को ओशन भी मारना पड़ेगा। स्टैमिना नहीं बढ़ता क्या बे? बढ़ता है बाद में। अगर तू स्टैचू अपग्रेड करेगा ना मारने के लिए ना बस एक दिक्कत पड़ती है, जब वो स्पॉन करती है ना, वो बर्ड स्पॉन करती है, उसको मारने के लिए कोई अच्छा तेरे पास नहीं है ना चाइल्ड है मेरे पे। हाँ फिर ठीक है। कहाँ स्पॉन है? एक सेकंड ओशन रेड नहीं अभी फिलहाल ये क्यूब मारेंगे। इरिटेट करके रख देता। मेरे को क्यूब मारने के लिए नहीं जम रहा मालूम क्या? मैं अभी नया 1 साल बाद खेल रहा हूँ ना तो क्यूब नया है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे मारें। और क्या क्या है कंडेंस हो गया प्लस ये इवेंट्स करा क्या? इवेंट्स का हो गया आधा, थोड़ा रह गया। Here, let me help you. बस अब एक लास्ट चाहिए भाई। फिर 2.5 आ जाएगा। नए अपडेट में तो बहुत कुछ आने वाला है। रस्टी इसके भी अपडेट बहुत खतरनाक रहता है। नए कैरेक्टर्स कैरेक्टर लाते रहेंगे।
बंदे तभी तो नहीं छोड़ पा रहे गेम। You're in for a little shock. होता है कि उसके अंदर पूरा गेम इतना तगड़ा चेंज मारते हैं कि बंदे खेलते ही रहते हैं। What do you think, cutie? इसका मैप बड़ा है ना बहुत। ट्रेंडिंग वाला गेम है, इसमें ये मजा बहुत बड़ा है भाई। तू नहीं हो सकता। भाई सुनो ना, ये इसका पूरा मैप कितना आएगा अभी, कितने जीबी का आएगा बताओगे जरा? फोन के अंदर पीसी पे तो ये 26 जीबी का था जब मैंने डाउनलोड किया था। अभी 31 जीबी का होगा। किया ना भाई 31 जीबी का है। 32 जीबी का अभी बढ़ गया होगा, ऑलरेडी 2.4 अपग्रेड मारा था मैंने। अरे नहीं, नए मैप्स आएंगे तभी क्या होगा? जब मैंने सबसे पहले फोन पे किया था उस टाइम पे 14 का था, अभी 16 समथिंग हो गया भाई। अरे नीचे कैसे जाते हैं? What do you think, cutie? अरे भाई नीचे कैसे जाते हैं? ठीक है भाई, यहाँ पे नीचे कहाँ से? अच्छा रुको, वहाँ से है क्या? रुको आया। कोको मेन बनूंगा भाई मैं, कुछ भी हो। ये सुनो ना, मैं यानफी और कोको में से खेलूँ क्या, या चाइल्ड? मैं आया हूँ उधर से। चलो आता हूँ फिर। भाई है ना तुम्हारे पास इतना खतरनाक कैरेक्टर, क्या ही जरूरत है? अंदर वाले तुम लोग क्या कर रहे हो रे? जेंशन इम्पैक्ट जो तू कर रहा है। अरे सुन, यहाँ पे जाने लेवल क्या है? आरडीएक्स। भाई जस्ट अभी शुरू किया है, वरना दोस्त के अकाउंट से खेल रहा था। तू? मैं खेल रहा हूँ, अभी मैं सो गया था एक्चुअली। मेरा लेवल 15 है भाई, लेवल 15। अभी चलो अभी मेरे सो गया भाई ये। गुड नाइट। अरे ओके गुड नाइट ब्रो। कैरेक्टर लेवल देखना है, एडवेंचर रैंक देखना है, क्या देखना है? एडवेंचर। तेजस्वी जी आप कल आ जाओ। हाँ वो तो 4 है अभी। बिंदास, हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वरना तो अभी मैं दोस्त का अकाउंट लेके खेल रहा था भाई, सीसी वगैरह के साथ। तो अभी क्या करने का है मैवरिक, बता कौन सा वाला टीपी खोलने का या फिर वो आगे का करके आने का? मैंने कहा भाई अच्छा थोड़ी वो देगा भाई। तो ये टीपी अंदर का कैसे खोलने का है पता है? वो अंदर जाता वहां पे रस्टी, तेरा वो वाला अकाउंट आ जाएगा बे, फोन वाला। नहीं ना यार, आ जाएगा अगर तू वही वाली मेल से जाने का क्या देखने का? घूम गया भाई, पता नहीं ये वाले टीपी पे जाने का ऊपर ही चल मेरे साथ। बहुत बढ़िया, फिर तो भाई कुछ तेरे पीछे आ रहा मैं। तू टीपी किया क्या कहीं पे? हां तू वहां पे किया, मैं आ रहा। आ जाने ऊपर। तेरा कितना लेवल हुआ है रस्टी? जल्द सोने को आया है। देख मैवरिक, मैं हूँ, रस्टी है, माफिया और यार डेक, हम सब ने डाउनलोड किया है अभी, मतलब इन लोगों ने किया है। अभी हम सब खेलने वाले, बट अभी जो भी मदद लगेगा मैं तेरे को बार-बार बुलाएगा। एक इसमें कितने बंदे खेल सकते हैं? एक इसमें कितने खेल सकते हैं मैवरिक? मतलब तेरे साथ 3 बंदे और। हाँ तो मैं रस्टी, एक बार हम सीख गए ना भाई अपने पास, अभी आरडीएक्स हो गया। एक बार हम सीख गए ना, फिर हो गया कल्याण। ये समझना भाई, तुम्हारे को बुलाएंगे अब सामने। फिर बेटा 1v1 करेंगे। इसमें नहीं होता भाई 1v1। भाई नोरा फतेह जा रही भाई, नोरा फतेह, उसका नाम नोरा था। बस मैं टैप 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 दबाता रहा भाई। ये अंदर ही जाने को बोल रहा है मेरे को, मेरा मिशन। क्या बोला मैं अभी? हां भाई 1 बजे फिर। हां एक मिनट थोड़ा गर्म हो लेते यहां से, फिर जाते हैं। पंछी बनो उड़ते जगह में। कहां पे? अरे वो तीर कमान नहीं होता वो लड़की का, वो नीचे नीचे उसको एम करके मार लीजिए उसके ऊपर। तो भाई मस्त। अरे वो अभी मैं वो कर रहा क्या भाई अपना लौंडा क्या कहते हैं, मेन कैरेक्टर को कर रहा भाई। ये भाई इधर है ना 30 लेवल के कुत्ते है भाई मारने के लिए अपने। भाई ड्रैगन आ रहा है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? भाई गया मैं। साला जमा दिए। How fortunate. अभी मेरे को इसको मारने का है। क्यों लग रहा है अगर इससे लड़ाई होती है तो मेरी गान थोड़ा रुको। तो ऐसा क्यों लग रहा है अगर इससे लड़ाई होती है तो गान फटे होते हैं। अबे गिर गया भाई। तूफान से आ रहे भाई। ओ वो रहा चिड़िया उड़ गई।
मैं अटक गया। my. आ गया। भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई? उतर जा रहा हूँ भाई। ये पूरी पार्कोर वाली लड़की थी भाई। तिजोरी खोलता भाई। नहीं भाई ये क्या मतलब है? इसको मारना है? भाई तो गलत है। इतना पावरफुल प्लेयर है वो, सामने मेरे मरेगा ही नहीं। मर ही नहीं रहे। आप ये पंछी तक कैसा? ओके वहां से जाने। अबे इसके अंदर वैलोरेंट वाला रिकॉइल है क्या भाई? इतना गलत गोलियां जा रहा है हर जगह। मरा ही नहीं भाई वो। How fortunate. पागल हो गया और कुछ नहीं। अरे मैवरिक आजा। हाँ भाई आ रहा। ये देख मैं उड़ने वाला चालू किया, इधर आजा। अरे पंछी तो और ऊपर जा रहा कुत्ता। रुक जा भाई। अरे क्या दुनिया है यहाँ पे? ये कौन है भाई? ये क्या दुनिया है यहाँ की? ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे मरने का ये मतलब इंतजाम किया है मेरे? Hold on, Anne. अबे उसको पहली बार डैमेज पड़ा है मेरा, बता बाकी नहीं पड़ रहा डैमेज। मेरे पास वो लाल पत्थर था इसलिए वो डैमेज पड़ा समझा गया। मरा मरा मरा, भागो 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 भागो, अभी मारो साला। वो भी गए। Bet you can't keep up with me. ये ड्रेसिंग रूम ठीक है भाई। Wow, these will come in handy. ये रहा। ये अगर किधर चढ़ गए तो उतरना कैसे वो बताओ मेरे को। कूदो नीचे। अरे अरे वो दबा दो। ओके एक्स दबा। हां एक्स दबा। अभी ये लोग नीचे क्यों नहीं आ रहे? अगो सिटिंग। तो नीचे नहीं आता, मैं ऊपर आ। मेरा प्लेयर भी बोल रहा है इट्स चीटिंग। किधर गया वो? पता नहीं भाई कौन मारा मेरे को। एक बंदे को मारा। भाई जब तक तीर चार्ज हो जाए तब तक तो हो भी गया काम उसका। हाँ वो उठा ले और तीर से वहाँ पे बीच में जो है ना उसको मार। एक ग्रुप साले। अबे इन दोनों के कपड़े में डिफरेंस क्या है? मेरे को तो दोनों सेम जैसे ही लग रहे हैं। भी वहाँ पे जाके स्टार्ट मारना होगा तेरे को। वहाँ पे नहीं लगा रहे दूसरा उसको। मेरा वो पत्थर खत्म हो गया। हाँ पत्थर ढूंढना पड़ेगा और पत्थर आगे लग रहा है भाई, कुछ लाल लाल चमक रहा था आगे। वहाँ पे जाके स्टार्ट मारने का एक स्टार्ट मारने का तेरे को। ओके ठंडी लग रही ठंडी लग रही ठंडी लग रही। गरम 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 करो। गर्मी चालू करो अंकल। थैंक यू थैंक यू। Can you feel the blessings of the एडवेंचर रैंक seven? एक्सप्लोर करने से खुलता In है ना? Mondstadt, people call them animalculi. हाँ They can be जैसे fitted मिशन into होंगे the वैसे वैसे statue's बढ़ेगा है eyes. ना? Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but अंदर पेटी animalculi है। never had a physical form from the start. People with वो देख visions वहाँ पे collect them to पत्थर offer दिखा। to the statues as blessings. Unlike others with powers, you don't have a vision. But in the rules of the
शूटिंग का Monster कैरेक्टर ले। Kanche, acting Grandmaster of the इवेंट तोड़ Knights भी of दिया गया है? Slowness. अरे एक This ही is Lisa, our resident. क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ। Sadly, storm terror simply ना put. यहाँ पत्थर नहीं था, वो हवा में उड़ने Only वाला था। for a mage, it couldn't get much worse. My skin is one element. We simply ask that you repose in नीचे Mondstadt. नीचे। We help you seek out your bed. एक मिनट, इधर गर्म होने आया मैं। हाँ अब बता। गरम होने? नहीं मिला मेरे को अभी तक पत्थर, वही तो मैटर है। आग लगा के गरम हो रहा है। I won't let you down. चलो एक और पत्थर चाहिए। और देख ना, ये वाला मैंने चालू किया है, देख ये वाला, Alright. ये ब्लॉक देख, ये वाला अंदर यहाँ पे डब्बा आ गया, बट अभी ये खोलने के लिए दरवाजा कैसा खोलने का? मेरे को लग रहा है ये तोड़ना पड़ेगा। देख पत्थर चाहिए इसको। पत्थर दिख रहा है कि देख, लाल वाला पत्थर किधर? अरे ये तो इनमें से दिक्कत है भैया। वो बताओ मेरे को, ऑप्शन सारे एम्बर लीजा, ये क्या सीन है ये? मेरी स्क्रीन देखो। भाई मेरे को लग रहा है और थोड़ा आगे जाके देखो क्या, एक मिनट। उनके साथ बात कर बोल। मीट एंड फॉरवर्ड द गुड बाय बोल, गुड बाय बोल। किसको करूं? बाहर जा यहाँ से। मिल जाऊं? बंद करेगा मैं गेट। नहीं कर सकता। यहाँ पे एक अंकल है, इसके यहाँ पे पत्थर है रे। F3 से विश दबाने को आ रहा था मेरे को। यहाँ पे एक बड़े अंकल है, उनके पास एक पत्थर है और एक चिड़िया भी है। कौन सा चिड़िया बोल रहा था? अच्छा वही वाला चिड़िया है। देखा अंकल बैठे देख। अरे बहन क्यों गर्म नहीं हो रहा मैं? हाँ अब हो रहा। मेरे को एक बार कुछ मिला क्या, देखेगा कोई मेरे को मेरी स्क्रीन? दो कैरेक्टर मिले। अच्छे हैं। अंकल को लेने का क्या? मेरा शायद तो तेरे मैवरिक तेरे वाला नहीं है ये वाला? मेरे पास है सर। भाई तुम भाई पता ही नहीं पिटका। फिर तुम भाई पिरो भी अंकल तो चले गए छोड़ के मैदान। कौन सा करूँ ये वापस दबाओ। अच्छा अच्छा ही नहीं भाई। No one escapes my sight. Not so hard. A lot weapon. तोड़ू? Enhance. Auto add. भाई नहीं नहीं ऑटो ऐड वो देखो देखो कहाँ पे, वहाँ पे सामने एक पत्थर तोड़ने का, वो देखो। डैमेज है 20 का ज्यादा। इसका है ठीक है, ये लगाता हूँ। वो ऊपर का तोड़ दिया वैसे मैंने, ठीक है। और एनहांस करके ऑटो ऐड करके नहीं रुक। आराम से आराम से आराम से। मैं ये चिड़िया को फॉलो कर रहा है वैसे अभी। ये चिड़िया मेरे को कहाँ से कहाँ लेके जा रही है पता है? वो सोल जैसा बोल रहा है क्या तू? Opening a chest is like unwrapping a gift. I'll race you there. अरे वहाँ पे ऊपर भी है रे वो लाल पत्थर। अरे इसके लिए कौन सा कैरेक्टर चाहिए, ये ग्रीन वाला? वो तेरा मेन कैरेक्टर चाहिए। मेन कैरेक्टर चाहिए मेरा? रुक जाओ, बदलते बदलते मेन कैरेक्टर बदलते। बर्फ वाले को अभी के लिए बाय बाय बोलते हैं। मेन कैरेक्टर ले स्विच। अबे ये टूटा नहीं रे, यहाँ पे एक है और हवा में। वही देखो क्या बोला, वो लाल पत्थर थे उसको मारने के लिए। अभी मिस हुए अपन, फिर से लाल पत्थर ढूंढना पड़ेगा। लाल पत्थर आना होता है बट ये आ नहीं रहा है। क्या चीज़ क्या वाला?
only we. ये क्या खोल लिया? मैं पता ही नहीं मेरे को। काम करना अबे वो देख, हाँ वो ऊपर देख रहा रिंग रिंग। हाँ वो यहाँ से ऊपर दूसरी तरफ जाने का है ऊपर। वाह मैं रुका आ रहा मैं भाई नीचे गिर गया उससे। बट यहाँ पे जो है ना बीच में एक उसको भी स्टार्ट टाइप ऑप्शन आएगा। अरे ये बर्फ में कौन वो से किया कैरेक्टर मैंने। से जाने का है? नहीं किया, यहाँ पे एक करना पड़ता है यहाँ पे सीसी। हाँ 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 बर्फ में कौन से कैरेक्टर से जाने का है? आग 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 वाले से। एम्बर से ना? एम्बर लगती है मेरे पास एम्बर अभी। उसका वो बढ़ रहा है पर। हाँ वो आग के पास जाके खड़ा रहना पड़ता है। वो तो बढ़ता ही है कोई सा भी कैरेक्टर ले। मेरे अरे इधर वहाँ फाइट वाला है, सुन मेरे सुन को सुन बताएगा? वहाँ पे एक पत्थर था जिसको स्टार्ट करना था, वो किया मैंने आते आते अभी। मेरे को इधर लड़ने का है क्या? स्टार्ट किया ना तू? हाँ ठीक है, फिर ऊपर जाने का। ये कुछ बता रहा है। वो बार Let's move. This was well done. चिपा की नहीं रही भाई, क्या करूं? कहाँ से जाऊं? Let's end this quickly. जाऊं कहाँ से? I will end you. इससे जा सकता हूँ क्या मैं? फिर रुक जा पहले। अरे ये इधर क्या है? मेरे को ये कोई जा रोबोट नहीं भी पा बड़ा रहा। आ गए भाई इसमें तो। अरे मैवरिक का आवाज एकदम ही कम क्यों हो गया मेरे लिए? पता नहीं, वो बहुत धीरे बोल रहा। ओके 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 ओके। भाई गाजर मिल You'll गया भाई। pay for that. Must keep training. चकावा। अरे मेरे को लग रहा वो देखो सामने जहाँ पे उड़ के जाना है वहाँ पे जरूर। अरे नहीं रे देवा, स्टैमिना खत्म। यहाँ से जाने से अच्छा वहाँ से ही जाता हूँ ना। Good thing I've prepared my secret weapon. Explosive puppet berry bunny. I'll protect us. भाई क्या पेल रहे हैं लोग? आओ। ये तेरा रैंक कितना हुआ रे रस्टी? 10 होने को आया है अभी। ओके भाई ऊपर आग है। हाँ है भाई, अभी मरता नहीं तुम्हें। रुक वापस चालू करता मैं। Bet you can't keep up with me. वो देखो सामने एक पत्थर चमक रहा है। वो लाल पत्थर नहीं है, वो ये वो आ गया। Let the show begin. इधर क्या करूं? यहाँ पे पत्थर भी है ब्रो। भाई थोड़ा रुको अंकल, मैं मार खा रहा है। हाँ अभी रुको, अभी मारता। ठीक है भाई, नहीं मारता मैं जब तक भाई तीर कमान निकालूं तब तक मार देता है ये अंकल हमारा। अरे वो लेवल 30 की इसको अपना भी 30 लगेगा। बीच वाला तोड़ू क्या आग से? आग वाला से जब भी उसको एम करके मारने का है। किधर है वो? पता नहीं, दिख ही नहीं रहा। टूट गया। हाँ भाई आ जा अभी। नहीं स्टार्ट कर दे। अब भाई आ रहा है। कहाँ से जाऊं? अरे सुनो ना, वो मैं लेवल 30 के रोबोट को, रोबोट मतलब वो नहीं क्या बेटा रहता उनका? हाँ उनको मतलब लेवल 30 होने के बाद ही मारना है क्या?
नहीं ब्रो, ये नहीं मार सकता तो। अरे उनकी हेल्थ ही कम नहीं हो रही। कौन मार रहा है? रस्टी बोल रहा क्या? हाँ को एम्बर इधर से नहीं मार रहा समझ हूँ। आ रहा कि करना किधर है, इधर क्या करना है इधर। भाई ठंडी लग रही थी, 1 मिनट रुका। वापिस काला जादू हो गया मेरे साथ। मैं नीचे गिर गया, मर गया मैं। क्यों? अरे वो पत्थर नीचे, मेरे नीचे जो पत्थर था ना, वो पत्थर हिल गया। वाह, टावर पिघला दिया बे। अबे तू अरे मैं ओके। नीचे नीचे मेरे जा। मेरे को अभी दिखाया तू नीचे नीचे गिर रहा है। अबे टावर चला गया, इतनी मेहनत की और हाँ ये ब्रो, उड़ गया। टावर ऊपर गया। अब क्या बाकी का बनेगा क्या? फुल कंस्ट्रक्शन ब्रो, कंस्ट्रक्शन साइट है अपना, एक साइड बिजनेस गाइस, देख रहे हो? हो गया लगता कंप्लीट। तू क्या बोल रहा था कि इससे लेवल अप करूँ जल्दी? मेरे को नीचे ही जाने को बोल रहा रे। बात करना, चल ना नीचे आगे। आजा नीचे, मैं नीचे खड़ेगा। डब्बास खोलने का है रे। मैं नीचे गिर गिर के मर गया ब्रो। वाह, ठंडी से मर नहीं रहा था मैं, नीचे गिर के मर गया। भाई मतलब उन लोगों से मारना नहीं हुआ तेरे को, पर तू गिर के जरूर मरा है। We should go back and ये खोल सकता है क्या? लॉक नहीं, लॉक्ड है, रैंक 22 चाहिए। तो अभी वो तिजोरी ओपन कर जा। ये ये पत्थर पढ़ ले। पढ़ लिया। हाँ अभी ऊपर जाओ, तिजोरी खोल। हाँ भाई मेरे प्लेयर का लेवल 17 भी हो गया बे। क्या बोल रहा था मैं? तेरा भी डैमेज है ना, लेवल 30 से जो कोई भी किसी को भी मार रहा है तू, वो मर नहीं रहा डैमेज की वजह से। तेरे को ज्यादा डैमेज। अरे एम्बर का पूरा डैमेज बढ़ाया मैंने, लेवल 20 का वो है। हाँ देख, मैं तेरे को वो लोग का कैलकुलेशन मैकेनिक्स कैसे रहता, तेरे से अगर हायर लेवल के एनिमी को मार रहा तेरा डैमेज कम गिरेगा, और तेरे से लोअर लेवल के मार रहा तो फिर मेरा डैमेज मल्टीप्लायर ज्यादा लगेगा। ऐसा सीन है वो। अभी अपने को क्या करने का है? मतलब मैं हायर इसको मारूं तो ज्यादा डैमेज। रिपोर्ट बैक बोल रहा नहीं मेरे को, नहीं ये नहीं किसी नहीं, को करने को। तेरा अगर 35 लेवल अगर होता और तू 30 लेवल के मॉन्स्टर को मार रहा तो हाँ। फिर तेरा ज्यादा डैमेज गिरता उसके ऊपर। अच्छा अभी कम पड़ रहा है, ओके। हाँ, और तू लेवल 20 का है और लेवल 30 के क्या इसको मार रहा, तो एशिया में ही खेल रहा ना। हाँ एशियन। हाँ, तेरा यूआईडी भेज सकता बाद में तू मेरे को, या सीसी को भेज दे, फिर मैं ऐड कर दूंगा। अभी उधर का मिशन नहीं करता फिर मैं भाई, बर्फ का मत कर अभी फिलहाल। मैवरिक, मैं तेरे पास वापस आ रहा है वैसे। आजा। अपन वो आखिरी बचा हुआ टेलीपोर्ट खोल लेते ना, मतलब बाहर का। मैं देख, मैं यहाँ पे आ रहा, मेन टावर पे आया मैं। आजा, अपन यहाँ से जाते बाद में आगे वो वाला टावर खोलने को, आगे का ये वाला। हाँ, तो फिर ये बचे हुए ये जो टावर भी हो रहे ना, ये बाद में यहाँ से ऐसा उड़ बिड़ के जाके। उड़ बिड़ के जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ से उड़ के जाऊंगा ना, ये देखना, ये पहाड़ पे, ये नीचे उड़ बिड़ के जाऊंगा यहाँ पे। अरे उड़ के जा सकता है, बट ठंडी बहुत लगेगी। Here seems trickier than I thought. देखते ना क्या होगा, देखा जाएगा। मरे तो मरे, क्या है उसमें इतना। इसमें थोड़ी इन्वेंटरी खाली होती है। हाँ भाई, आना पीछे में, उड़ के गया भी आगे। वाह, मैं तो रह गया। तू किधर, गड्ढे से गया क्या? नहीं ब्रो, ऊपर ही मैं, ऊपर देख। सीढ़ियों से, ओके If ओके, only दिख the गया। wind was a little stronger. उड़ के गया। अरे हाँ, मतलब सीढ़ियों की तरफ ऐसा। वाह, क्या पंखा है तेरे, गुलाबी या पे गोल्डन अपने निळे। हाँ, तुम्हारीच कमी थी कुत्तो। आई गो, दैट्स चीटिंग ब्रो, सच में दैट्स चीटिंग। बहुत मार रहे मेरे को। बीच वाले टावर की माँ की आँख। Isn't that Jean? Seems she's
talking to someone. Let's let her finish, then go say hi. Which is what has brought us to this point in the first place. If you are unable to promptly deal with the storm terror threat, then leave the defense of Mondstadt to the Fatui. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. All we need to do is bring that monster to the... तो ऐसा कंपल्सरी Monster? तो नहीं है ना सबको Yes. करना अगर मैं What's इसको ही your करता point? रहूं तो वो सामने देख क्या चमक रहा है I'd वो लाल लाल expect वहां a जाने more का क्या professional attitude from your diplomats. वो Yet तो है here you उसके are लेफ्ट में saying देख you want to put an end to one of the four winds of Mondstadt? I won't have any of this nonsense in front of the Knights of मारामारी है। Favonius. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage, it's simply an amicable exchange of constructive देखने का क्या opinions. ट्रायल्स No? I'll be sure to make thorough notes. Oh, you're back. Thanks for your help. मेरे The elemental को flow is रेजर finally नोली मिले stable. नोली क्या नाम The है aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Delegation? From Liyue Harbor or Inazuma City? Shneznaya. They choose to follow the god of cryo. Their envoys go by a particular name, the Fatui. वो है Heard of क्या them? अच्छा Oh, them? They're super famous. Wait, infamous is more the word. I don't think killing Storm Terror is the right course of action. The cryo gods Fatui have always coveted the Animo god's power. I don't believe they have Mondstadt's best interests at heart. What is it? Oh, let us head back to headquarters then. We shouldn't discuss important matters out in the open. Mondstadt and Snezhnaya are considered the same in status. Mondstadt is independent and does not belong to any other nation. In fact, despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Though, Snezhnaya's Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Teyvat. Makes sense given the tone of that woman just now. So rude. It's a crystal embedded with some kind of power. Lisa, are you able to analyze it? Let me take a look. I can see impurities in the crystal, but upon further inspection... No, I'm sorry. I can't make a proper analysis at the moment. Give me some time. I'll take a look through the library's restricted section. Right. I'll leave the research to you then, Lisa. Understood. I'll notify you all if I make any progress. Though I wouldn't go getting your hopes up. They're incredibly ancient texts, not to mention... Ouch! Gosh, that hurt! The impurities in the crystal... It hurts when I get close. Oh, I see. It appears to react to visions. The impurities and the elemental energy we embody repel each other. It's strange, though. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. Anyway, the crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us, both literally and metaphorically. Fascinating. Do you know anything about what makes you special? I do not know what to make of it either. Well then, the Knights of Favonius have another favor to ask of you. Please accept the title of Honorary Knight and the gratitude of the Acting Grand Master. Honorary Knight of Favonius? We ask for your continued assistance in finding some answers. Storm Terror's rage and strange crystals. I know Mondstadt's peace hangs in the balance,
May the wind open your eyes to the truth. We'll meet back here if you find anything. There's something you didn't tell them. The dragon and the crystal weren't the only things we saw. So you do remember him, that green guy! He looked just like that guy down there! See? See? Wait, hold on a minute. That's the same guy! That green guy disappeared! Use elemental sight to track him down. His footprints lead to this wall. Did he climb up from here? गाना म्यूट किया मैंने कॉपीराइट भाई कॉपीराइट What is to be sung transpired in days of yore, when the divine archons still walked the earth. A dragon cast his curious gaze on the world below, as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The wind-born bard strummed his strings dulce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child full of wonder, and soared the heavens free from care. The
bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The Lion Fang perished, and the Falcon Flag slept, as a vile dragon approached Mondstadt in lone stand. Over the cathedral loomed Death and his friends. Of the people's agony, the bards soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms a brutal war sprang. Blood of venom sent the sky dragon into slumber, only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy liar replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence, but the liar could no longer soothe his cries. Wait, you guys are... Oh, that's right. You're the ones that scared Dvalin away. Dvalin? Who's that? Huh? Oh, right! Most people seem to call him Storm Terror. Why do you call him that? Are you two meant to be close or something? Oh, so close. Hey, so... Paimon thinks this guy has a screw loose. I'm Venti the Bard. 3-time winner of the most popular bard of Mondstadt, to be precise. So, what do you need from me? Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Of course it's about Storm Terror! Storm? Hey! Cut it with the Amnesia Act! Alright, show it to him. Oh, isn't this... What? The crystal has been purified? When? Dvalin, he... The anguish he feels has brought him to tears. Tears? He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? Huh? You really do have some wonderful abilities. Someone like you is going to end up getting written into a bard's poem. Oh, a hero so bright should she stand in the light, though stand in the shade, and you'll be met by a blade. Alas, I've really not the time to compose a melody for you at this moment. Anyway, even if Dvalin is not taken down, his life will still wither away in the breeze. He'll burn himself out in the flames of anger. I really must thank you for purifying the teardrop crystal. It has helped me greatly. But I've already come to devise my own plan. Oh? And what plan would that be? Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. Friend? One must be going. Hey, where are you running off to? To the symbol of Mondstadt's hero. Bye-bye. Huh. What do you make of that? As far as he's concerned, you're a weirdo too, you know. Know what?
familiar? I don't know. You're alone on that one. But did he just say symbol of Mondstadt's hero? Oh, Paimon knows! It's that huge tree! You know, the gigantic one! You can't miss— Oh? What are you doing here? Though I was just wondering if you would happen to follow me. You speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago. Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Why do you wish to know about the god of Animo? Does it have something to do with Dvalin? Oh, it's because gods... Just how is it that everyone sees Storm Terror? I'm quite curious. That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. The wind! I can't open my eyes! What is a creature like that doing out here in such a cold place? You think it was going after that green guy? His relationship with the wind seems even deeper than yours. Let's dance. Seems the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind. Now then, you were saying someone had told you about the dragon? Is that so? Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to the Four Winds. Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? The black blood flowing through his heart has been torturing him for years. That's what has allowed him to be led astray by the lies of the Abyss Mage. They are from the Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. They despise mankind. I don't know where they come from. All I know is that they hold deep hatred toward the human world. Many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their weapons. Before arriving here, I too was like Dvalin, cursed and left to waste. But now,
before us stands the symbol of Mondstadt's hero, the place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Like the poison is leaving my body. Feels much better. So, how exactly did you get poisoned? That would be because I tried to communicate with Dvalin earlier, but was interrupted. As a result, not only did I not manage to help Dvalin break his curse, yes, it was you. So to make up for it, you're coming with me to the cathedral. The Mondstadt Cathedral? To do what exactly? To claim a certain holy lyre de Himmel. I won't let you down. अच्छा ये बाहर ही खड़ा है। वाह ये बाहर ही खड़ा है। So this holy lyre de Himmel is... one of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. With it, perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world. There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? So how can we get the holy lyre? It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. I'll go take a look around. You can come if you want. Let me handle this. Hello there, sister! May the Animo God bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of Animo! But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. With it, I'll be able to help Storm Terror. Please see yourselves out. What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. Please, I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Then,
I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! Huh? She didn't even bat an eyelid. But I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral is enshrining the Holy Lyre. Now, since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. Barbados bless you. I know you. You and Amber saved Mondstadt that day. So what brings you here? Tasks from the acting Grand Master? Is that so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came looking to borrow the Holy Lyre as well. He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Signed documents from the Grand Master, Seneschal, and community representative are all required. So, may I see the document from the Knights of Favonius? A signed document is required. Without it, there's not much I can do. Now, if you'll excuse me, I really am quite busy as of late. It didn't work. I knew it. You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And yet, does the story not make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very eyes. Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. We're simply going to have to steal it. Today we stand for free will. Come now, speak up. That's what free will is for. Look at you, sidetracked from the start. But seriously, you're more suitable for the job than I. Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice of my arrest. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. You have made contributions to Mondstadt. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. The guards here, it seems they're off duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from here. Stop mentioning us getting caught! What do you say? Yes. Seems I did mention that. Your point being? Why does your decision hinge upon whether or not I am a god? Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Huh? What should I get to take back to Lily? Queen will be upset
if she catches us lazing around like this. 18 to 6. देखते हैं भाई, चुराना है, कुछ गड़बड़ ना हो। Who are you? She disappeared! Freeze! What are you doing here? No, run! लग गए। L Oh no! We're busted! Run! What? L Follow लग me. गए भाई, L लग गए। Get ready! Master D-Luke, this is this week's accounts. The disaster has greatly affected business. Well, let's hope it all ends soon. Hi! We'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. I'll go ask around. Ask who exactly? The protectors of Mondstadt.
Master Diluc, have you seen two thieves around? What happened? Why have you mobilized so many guards? Haven't you heard, Master Diluc? Two thieves are trying to steal the Holy Lyre! Huh? How odd. Isn't it? The Holy Lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master Diluc. Today, I think I'll have a glass of... You can put down that bottle you stole from behind the counter. something cold. Right. I want answers. Let me finish my drink first. I'll pay you. Well, with a performance. It's not about money. You seem too young to be drinking. No need to worry. When I started drinking, you were still... He is Master Diluc, the boss of... the owner of this tavern. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the Holy Lyre de Hamel. Even if you are fools. But we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot? Oh, so it's you. So, you and the Bard are close friends? Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. A shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. And towards the Fatui, weak and conservative. Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you steal the Holy Lyre? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make my own judgment. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Lyre. It all depends on your story. Very well. Let me put on a show. What did I just witness? This is confidential information. Why did you let me know? Why? Perhaps the winds are changing. What say you, Master Diluc? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. As for the Bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I like taverns. Okay. Let's meet here tonight after the tavern closes.
तो ये बंद करते हैं अभी। कल दोपहर से खेलेंगे, मजा आ रहा है भाई। You're here. Wait, you're... Well, first of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise. I heard about the Holy Lyre, but I never suspected it was you. So, the sound of the Holy Lyre can purify Storm Terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this Storm Terror issue. Now that's the hot shot of the Knights of Favonius I'm talking about. Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our stubborn command... Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the Four Winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't really blame it. But as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the Storm Terror issue. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in private. That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe in Outlanders so easily. My cautious and meticulous superior, even you trust him, don't you, sir? I already told you not to call me sir. Never mind. We don't often get... Wow, this is really awkward. I have a rough idea of where the Holy Lyre de Hamel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Snezhnaya stems from the conflict between the Seven Nations and their respective gods. The cryo-gods Fatui seem to be after the Animo god's power. Right. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Dvalin's head, then the only other way to affect the Animo god's power is to take the Holy Lyre. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to coerce a few reports out of them. Diluc has determined that the Holy Lyre is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the Seven Nations. Outlander, ready to go? Jean just said the Fatui are trying to take Dvalin's power for the Cryo God. I fear this might fall short of their true intentions. I think they intend to use Barbados' connection to the wind. Just like Lisa traced the source of the storm to the temples. The god of Animo? It's... Oh...
Huh? Forget it. I don't like having to pry. Here, take this. What is it? A disguise to protect your identity. Put it on before you run into the Vaiii. Unfortunately, there's still one of Mondstadt's allies. At least that's the facade we're maintaining. Ta-da! Barbara's here. Leave the healing to me. I will not disappoint you. Hello, nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a chef from Liyue. My favorite place is the chicken. I mean, ta-da! Barbara's here. Leave the healing to me. I will not disappoint you. Our actions are going to get them stirred up. Better to not implicate yourself on a personal level. Freeze! Cool it! ये करके जाते हैं भाई. Dodge this! I'll protect us. No! Don't eat me! The entire floor's defenses have been broken. I thought it was the Abyss Order attacking. How did you guys know the liar's here? The place it's being kept is locked up tight. If you're after the key, keep going further into the ruins, but don't come after me. I don't know which one of the guards has it, but I'm sure you can find the guards and find out for yourselves. This guy looks like he's about to wet himself. You just worry about yourselves. One of the 11 is already in Mondstadt. Signora, when she gets her hands on you... Did he say Senora? What a strange name. Number 8 of the 11 goes by the name Senora. The fact that the Vaiii can run amok across the 7 nations like they do is entirely because of the 11. We need to act quickly before she gets wind of what's going on.
Seems like we've turned this room inside out, but no key. Time to move on to another room. Who are you? Never heard of that, What are you lot doing here? That lie's way too obvious. And just how do you... Think you can look... The will of There you are, eavesdropper. Over here! Boof! Blink! Who can I find? Boof! You really know how to get me going. The more, the merrier. He says the key isn't here. Shall we try another room? Told you I'd win. Ah! Ah! Cool it! Seems like we've turned this room inside out, but no key. Time to move on to another room. There's one room left that we haven't tried. Surely the key must be in there. Who are you? Did you already beat all the other guards? What? I'm not scared of you. A debt collector will come to my aid.
Fine. Not like I have a choice anyway. All right. I have the key here. You can head in from the hall outside. You rats scurry out from? Signora's not going to tolerate this kind of interference in our affairs. So I'll be the one to take care of you. Save her the trouble of having to deal with you herself. Prepare yourself. Leaving so soon? No escape. Prepare yourself. Not so hard! I'll never surrender! Tired. So soon? I'll protect us. No escape. Time for retribution. Leaving so soon. You can't run from death. Damage देखो भाई. Finally, the liar is back in safe hands. Where did that guy go, though? He was here a second ago. Signora is going to end you. The songs bards sing of your demise will be so terrifying. The people of Mondstadt will never sleep again for the nightmares they give them. Big talk for a guy who still ran off in the end. Chicken. 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 चलो गाइस बंद करते हैं. बाय बाय. ख्याल रखना अपना. गुड नाइट.